of our प्रो कबड्डी लीग लाइव स्ट्रीम एवरी थर्सडे. हम लोग ये हर हफ्ता थर्सडे को 7 to 8 करते हैं, where we talk about प्रो कबड्डी एक्शन इन द वीक गॉन बाय. इस हफ्ते भी बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, बट वी आर गोना ट्राई एंड कीप इट अ लिटिल शॉर्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों जो लोग हैं दे नॉट डूइंग वेरी वेल हेल्थ वाइज. So we're going to try and see if we can wrap this up a little early today. Interesting week raha hai in a lot of ways. बहुत सारी matches हुए हैं and we've had one additional day's break because of Diwali in a lot of senses. Thank God, क्योंकि हमारे हाथ को थोड़ा rest मिल गया कि रोज ऐसे दो दो तीन तीन matches blog ना करनी पड़े. But Mayank, generally, what did you make of the games that we had this week? आई फेल्ट कि ये वीक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहा इन टर्म्स ऑफ ऊपर की जो टेबल टॉपर्स जो टीम है लाइक फॉर फॉर एग्जांपल दबंग दिल्ली हो गई दे डिडंट हैड द like the week they which they wanted. For example, the way they played in the first 2 weeks, they wasn't able to continue in the third week. So उनकी दिवाली तो I don't think उतनी अच्छी रही है, but there are few teams, uh, let's say for example, you Mumbai and Bengaluru Bulls, like they've played one game which will be the talking point of the week, which was the talking point of this week rather than. एंड लेकिन इन दोनों टीम ने कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और विल टॉक अबाउट पुणे एज वेल. दीज आर द फ्यू टीम्स जिनके लिए ये दिवाली वीक काफ़ी अच्छा रहा है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस मुझे लग रहा है कि मैचेस और क्लोज हो रहे हैं. हमने एक और टाई मैच देखा है, 3 बहुत क्लोज मैचेस भी हमने देखे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टीम का जो दबदबा था पहले 2 हफ्तों में, दबंग दिल्ली उनका भी 2 में से अब 2 वो हार चुके हैं. तो और बीच में तो पूरे हफ्ते अगर आप आखिरी 2 दिन हटा दे तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने उनको डिथ्रोन कर दिया था. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट इन द लेटर हाफ. सो पहले 3 हफ्तों में इतना कुछ हो चुका है. बाय द वे हमने ऑलमोस्ट 1/3 सीजन कवर कर लिया है. लाइक हर टीम ने ऑलमोस्ट 7-7 मैच खेल चुके हैं. 42 मैचेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. तो अब बाकी जो नीचे की टीम्स है, पटना, तमिल, तेलुगु, they have to buck up and क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है ज़्यादा. So in a lot of senses, बहुत सी teams की जो campaign का fortune है, that's already been set in stone, if I can say that. Primarily because you have a lot of team combinations that have now sort of settled in. You have एक sort of form बन गई है बहुत सी teams की, जो we can see how who's performing, who seems confident enough, who's coming in and plugging those gaps in every single game that they play. So these are things that we're starting to see a little early. एक इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, आई मीन it's sort of a development that we kind of saw coming कि तमिल तलाइवास का कोच अभी चेंज हुआ है, which is kind of sad to see Uday Kumar go, because as a tactician that man has everything that you will need to have to sort of take a team forward. So tactics were not their problem basically. Tamil Talaivas ka, it was just execution and having men on the mat कि वो काम कर सके. Meanwhile, we have somebody in our comments saying, "Hi, Gurnam Narwal." Hi, Gurnam. आपको कैसा लगा इस हफ्ते का प्रो कबड्डी एक्शन? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए. इफ एनीबडी स्टूड आउट टू यू, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर मैच बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज आप कमेंट्स में डाल के हमें बता सकते हैं. So yeah, this has been an interesting week because we're finally starting to see teams accept their fortunes in a lot of senses. एंड हम तमिल तलावास की बात ही कर रहे हैं, जहाँ गुरनाम पूछ रहे हैं पवन शरावत कैसा है. अगर हमें पता होता तो हम आपको बोल देते, पर बहुत से लोगों का मानना है कि उनका एक एसीएल टेयर हुआ है. हमें एज इट स्टैंड्स ये भी हम क्लैरिफाई कर दें कि लीग से या फिर तमिल तलावास से ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है. We still do not know what it is. We don't know what the extent of the injury is or what the nature of the injury is. So जब तक लीग से कोई या फिर पवन से खुद कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं जाती, हमें पता नहीं चलेगा. मीनवाइल पवन का जो एजेंट है, उन्होंने कोई पोस्ट डाला हुआ था कि पवन मुंबई में है, द ताज होटल देयर. बट देन अगेन, दीज आर स्टिल थिंग्स दैट एन एजेंट्स पोस्टिंग. वी डू नॉट नो कि उनका हेल्थ का स्टेटस क्या है. वी डोंट नो व्हाट इट इज. इफ इट इज अ सीरियस इंजरी, वी होप ही टेक्स टाइम ऑफ. आई मीन पीकेएल है तो है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द एशियन गेम्स. और पवन के बिना ये इंडियन टीम शायद जाना भी नहीं चाहिए यार. यू गॉट, ही इज लाइक योर बेस्ट रेडर, सो यू शुड हैव समबडी लाइक दैट. सो अगर उसके लिए एक एक या एक सीजन का पीकेएल
कुर्बान करना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक दैट्स such a bad deal. So I anyway, but guess I guess Tamil Thalaiwas is not with you in this no, phrase. I guess obviously, उन्होंने पवन obviously, पवन उनके coach like top leader captain और अब coach, so it's like things yeah, are not going to their favor yeah. as of now. Mhm. Absolutely. But I mean, obviously, man, if we have to look beyond PKL, एक Yeah, season yeah. खेलने में अगर आपका knee या फिर if it's an ACL, even worse, if he makes it worse, then it's not worth it. So we don't know, Gurnab, very honestly, there is no official word at all. So we really don't know what the scene is. But we, for what it's worth, he's not featured at all. He's not been with the team. Team के training में नहीं है. He's not even sitting sidelines पे भी बैठ के देख नहीं रहा है. So I mean, that should tell you it requires a fair amount of rehab. So I hope कि he just gets better and we get to see him इस season में Although अगर देख पाएंगे तो great. I mean, we are waiting for that. yeah, although कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आई नहीं है, बट आई डोंट थिंक पीपल शुड हैव हाई होप्स कि वो इस सीजन में वापस आके आएगा कम बैक करें। नहीं पर लाइक आएगा भी अगर आएंगे भी तो बहुत लेटर हाफ्स में हो सकता है, या लेकिन और पॉइंट वी आर नहीं है नॉट ना वेरी लाइक श्योर। बाय देन द या टीम इज डन यू आर नॉट गोना करेक्ट सी हिम करेक्ट। प्ले अ प्ले ऑफ बाय दैट्स नॉट दिन गोना की बात हैपन हटाओ, 6 में से 4 हार चुके, एक ड्रॉ है, या तो मामला अभी सेट है उनके लिए। तो आई या आई डोंट थिंक कि मतलब जो फैंस हैं उनको अपने होप्स को बढ़ाना चाहिए, बट या विश दैट्स ट्रू बेस्ट विश तो कर ही सकते हैं। That is true. That is true. Absolutely. So that's all we can give you in terms of an update. But generally, अगर हम देखा जाए तो I know Pawan was like a huge talking point in the beginning of the season, because उनका injury first match में पहले 10 मिनट में हो गया था. So I understand how important that is, given he is your most expensive player, star है league का and everything. But to be very honest, like in the okay second week भी हम पवन के बारे में बात कर रहे थे, पवन के बारे में ही बात कर रहे थे, especially when we were talking about Tamil Talaivas. But to be fair, in the third week, I think we've moved on from there. I know fans want to know and everything, but the action has moved past the Pawan conversation a while ago, and that's a healthy sign for this league because performances ऐसे हुए हैं. बाकी सारे टीम्स के जो रेडर्स हैं, दे आर स्टेपिंग अप. वाई तमिल तलाइवास के खुद के रेडर्स आर स्टेपिंग अप, मे बी नॉट इन द एक्सटेंट. पवन की तो बराबरी हो नहीं सकती, विच इज द प्रॉब्लम हियर. हम सबकी बराबरी पवन से कर रहे हैं, स्पेशली इस टीम में. बट इफ यू लुक एट इट, इट्स बिकम सो मच मोर कंपेरेटिव. जैसे मयंक आप बोल रहे थे 5 मिनट पहले कि बहुत कंपेरेटिव हो गया है, मैचेस बहुत क्लोज जा रही हैं, एंड टॉकिंग पॉइंट्स के एक हिसाब से वी हैव सो मेनी प्लेयर्स टू टॉक अबाउट. सो आई थिंक दैट वे we don't have much to worry about. ऐसा नहीं है कि पवन नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है. So in that sort of a sense, I think we're set for this season. So instead of beating around the bush, let's just dive directly into some of these teams and see how their combinations have sort of evolved, or how their fortunes have evolved in this particular week of kabaddi. We're going to try and keep this episode short, like I said, क्योंकि यहाँ हम लोग चेन्नई में हैं. चेन्नई में I think we're expecting rain in some time. So before we get disruptions signal में या आवाज में या फिर बच्चे मंदिर ये सब शुरू होने से पहले, और यार दोनों ही बुखार और कोल्ड के साथ बैठे हुए हैं. So we'll give ourselves some rest and give you all also some rest early today. So Mayank, why don't you begin by talking about one of your favorite teams, Bengal Warriors? Okay. Okay, I'll talk about Bengal Warriors. Okay, before that, if Lavan is possible to show our fans the Points points table. table. Yes, it is. Hold on. It is possible. Keep getting into your Okay, I can't hear you. You're on mute. Anyways, I'll start talking about Bengal Warriors there. Okay, so Bengal Warriors, as I can see, they're on fifth position right now. उन्होंने एक पोजीशन का जंप लिया है सेकंड वीक में. दे वर ऑन सिक्स्थ पोजीशन इन द दे ग्रैब द सिक्स्थ पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वीक. अभी वो फिफ्थ पोजीशन पे हैं. उन्होंने इस हफ्ते सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं, तो क्योंकि इस हफ्ते एक एक्स्ट्रा ओके पॉइंट्स टेबल वी कैन सी दैट Bengal Warriors are on fifth position. So इस हफ्ते उन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं. मैक्सिमम टीम ने इस सीजन इस हफ्ते सॉरी कम मैचेस खेले हैं. तो पहला मैच उन्होंने 25-27 पुनेरी पल्टन से वो हार गए थे. काफ़ी क्लोज मैच था. पुनेरी पल्टन की बात हम आगे करेंगे आगे स्ट्रीम में. लेकिन जिस तरीके से ये हार्ट ब्रेकिंग लॉस था, क्योंकि
बंगाल बहुत कड़ी टक्कर दे रही थी पुनेरी को, लेकिन पुणे में हमने देखा है कि वो क्लोज मैचेस ही जीते हैं। उन्होंने आखिरी के 3-4 मैचेस सारे के सारे 1-2 मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट्स के डेफिसिट के साथ ही जीता है। तो इट्स नॉट, हम ये नहीं बोलेंगे कि बंगाल लाइक जीता हुआ मैच हार गई थी, उनको और भी एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। लेकिन इस वीक का जो मेन सबसे बड़ा मैच रहा, वो कह सकते हैं, क्योंकि दबंग दिल्ली जिस फॉर्म में आ रही थी, और देन उनका मैच था सुपर मनी के साथ। तो लाइक इवन PKL दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ दोस जाइंट क्लैश, हाउ दोस टू जाइंट्स विल क्लैश अगेंस्ट ईच अदर। तो हमने देखा कि इवन दो दबंग दिल्ली के लिए नवीन ने सुपर 10 लगाया, लेकिन जिस तरीके का खेल बंगाल वॉरियर्स ने दिखाया, इवन दो उनके जो ऑलराउंडर है दीपक निवास हुडा वो नहीं चले, लेकिन डिफेंस में वैभव गर्जे, क्या क्या ही गर्जे उन्होंने अपना उन्होंने बखूबी गिरीश शेरनाग का साथ दिया। गिरीश शेरनाग अभी इस सीजन में अभी टॉप डिफेंडर हैं, उनके नाम सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स है इस सीजन। उनके साथ साथ इस मैच, जैसा मुझे याद आ रहा है कि श्रीकांत यादव भी इस मैच में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इवन देन मनिंदर ने एक बढ़िया प्रदर्शन किया, 10 पॉइंट लिए इस मैच में, 9 पॉइंट उन्होंने रेड में लिया था, 1 पॉइंट उन्होंने डिफेंस में लिया था। तो एक ओवरऑल एक ओकेश सा वीक रहा उनके लिए, एक जीत एक हार। लेकिन वो ट्राई यहाँ से ये करेंगे कि जो क्लोज मैचेस है, जैसे पुणे के साथ उन्होंने 2 मैच से 2 पॉइंट वो मैच गवा दिया था, वो मिस्टेक रिपीट ना करें। बाकी कोई खास दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है, अनटिल अनलेस अगर वो दीपक निवास हुडा के साथ क्या चल रहा है, आई डोंट नो। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अब एक मैच में उनका एक 12 पॉइंट का एक रेड 12 रेड पॉइंट का एक मैच था, उसको हटा दे तो पूरा सीजन शांत है। तो अभी 5th पोजीशन पे है, उनको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन ये टीम ठीक है, अभी अभी की तो ठीक लग रही है मुझे। आप क्या कहोगे लावण्य इस पे? आई एग्री। बहुत सी इंटरेस्टिंग वीक रही है बंगाल के लिए, सिंपली बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू वर सेइंग, राइट? उनके दो लॉसेस थे बिफोर दे केम इनटू दिस Delhi match, and the interesting part of those losses were in both those games Maninder was really quiet. And again we're coming back to the same thing यार, sometimes मुझे लगता है कि हमने जो वीक 1 में रिकॉर्डिंग की थी ना, उसी का स्निप बना के हमें हर हफ्ता चलाना चाहिए। बिकॉज बंगाल वॉरियर्स में भी अगर मनी नहीं चलता तो टीम नहीं चलता, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी स्पोक अबाउट इन वीक 1। वेरी करेक्ट। And the fact that we're still talking about it in the third week is not encouraging at all for Bengal. What Yeah, is encouraging for Bengal is how their defense stepped up. I think they had 19 or 18 points, tackle points, in this in Delhi the match, previous match, yeah. which is, yeah, which is saying a lot of things, because this defense was very patchy in the first week. पहला हफ्ता जब हम देख रहे थे इनकी performances, Giri Sharnak had those super fives, I'm saying high fives in the first half, and then he just taper off, right? उनकी consistency में थोड़ा सा improvement दिखाई दे रहा है. That is one. There is The a good other important, stat. Okay, sorry, you yeah, continue. बोलो बोलो, yeah, please. There is a good stat to Bengal Warriors. They had 79 tackle points as a team in 7 matches, which is the second best in this PKL season right now. They are just behind Jaipur Pink Panthers, जो कि बहुत solid लग रही है अभी defense में. So this talks so much about the way Bengal Warriors Bengal, have yeah. stepped up in defense. Absolutely, absolutely. Exactly what we're trying to say. So the thing is, I think the positive for them is the fact that jab Raider nahi chal raha hai, their defense is still working. And like you said, Vaibhav Gharje has been such an important part of this sort of resurgence for them. Because Shubham Shinde hai, Girish Arnak hai, fine, they're performing fine. But if you see that Balaji and Vaibhav chain is actually pretty weak, primarily Yeah, because Balaji. It's for no Balaji. Yeah. fault of his own. Yeah, it's for no fault of his own. But उनके advanced tackles की problem होती है. Sometimes they're too eager, या फिर No, tackles if midline if के there बहुत is fast जाके करते हैं. if there is हाँ, one weak link in Bengal Warriors, it is Balaji for sure, exactly. along with Deepak Nivas. Exactly. See, I understand the need to have Deepak Nivas Huda because, like we discussed that game when he came through for Bengal, that was a crunch situation where he came through and he supported Maninder. And the thing is, this is a player who's capable of doing that. So Correct. hence you can't keep him out simply because ये विराट कोहली की बात हो गई ना. Except विराट कोहली was not taking 0 points. वो फिर भी कुछ यहाँ वहाँ कर रहा था सेंचुरी के बिना.
But it's the same thing. Like you're there, he's in some sort of a rut. I'm not able to pinpoint ki unka kya, what's going wrong with Deepak Nivas Huda. But likewise, just because Maninder ke 9 point aaye is game mein, doesn't mean that that was a flawless performance. Yahan bhi Maninder was making mistakes in the sense that उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, इट इज द फैक्ट दैट ही स्ट्रांग, उनको डिफेंडर्स के थ्रू बुलडोज करके पॉइंट लगाना आता है. बट बियॉन्ड द पॉइंट देयर इज ओनली दैट मच यू कैन डू, और दैट मच यू कैन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ. बिकॉज बहुत सी लोग आपको कितने सारे सीजन्स में देख चुके हैं, दे हैव प्लान्स फॉर यू. दिल्ली के भी प्लान्स थे फॉर मनिंदर, एंड कृष्ण धुल वॉज डूइंग अ फेयर जॉब. उसका अगर सपोर्ट थोड़ा ज्यादा होता, देन ही बी एबल टू टैकल मनिंदर अ लॉट मोर ऑफन. But again, we come back to the same thing. He needs to figure out, like, see, Naveen, it's very interesting to see ki Naveen has added this dubki. Yesterday, he took so many points. I think, what, three, at least three times he employed the dubki and employed it successfully, which says a lot. Naveen ki body type alag hai. It's, again, comes down to we can't compare Naveen and Maninder. Their body types as Raiders are different. Their strategies as Raiders are different. बट अगेन दैट शुड टेल यू नो, अगर ये लड़का जो ऑलरेडी बहुत क्विक है, जिसको पॉइंट्स फास्ट फास्ट लेके भागने की आदत है, बोनस लेने की आदत है, अगर वो भी डुबकी सब चला सकता है, मनिंदर ऑल्सो आई थिंक नीड्स अ लिटिल वैरायटी इन हिज रेडिंग. बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा स्टिफ दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट ग्रेट फॉर हिम, Yeah, I especially when would. it comes down to him taking points alone. या Yeah, आई वुड bolo लाइक Mayank. टू ऐड, आई वुड लाइक टू ऐड आपने जो बोला उसी में, लाइक कल के मैच में अगर हम ध्यान दें तो दे वर मेंटेनिंग अ गुड लीड इन द एंड, जो कि उन्होंने बाद में एक तरीके से गवा दिया, क्योंकि इवेंचुअली दबंग दिल्ली वाज द वन हु वर प्लेइंग एग्रेसिव, क्योंकि उनको पॉइंट डेफिसिट कम करना था. लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा इंटेंट की कमी दिखी from the side of Bengal Warriors. Like they were going for long raids. I know they just wanted to have the 5 points, बट आई गेस अगर यहाँ पे वो, अगर वो मार्जिन को मेंटेन करके रखते, 7 पॉइंट का जो डेफिसिट है उससे ज़्यादा वो मेंटेन करके रखते, तो एक पर्सनल बूस्ट मिलता उनको. क्योंकि पर्सनली आई फील श्रीकांत यादव is like kind of in a way, मतलब you may not agree with me, but I feel कि वो मनिंदर जैसे ही है. मतलब उनकी बॉडी टाइप भी, उनका खेलने का तरीका भी, उनके स्ट्रेटेजीज भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगता है मुझे उनमें और मनिंदर में. तो एक एक नोवेल्टी पॉइंट आ नहीं रहा है. मतलब ऑब्वियस सी बात है जो आपने बोला कि ही इज वेरी बल्की एंड ही इज वेरी स्ट्रांग, तो उनको मतलब रेडर्स को रोकना मुश्किल है. लेकिन अगर रेडर्स उन, सॉरी डिफेंडर्स, अगर डिफेंडर्स उनके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटेजी बनाए तो उनको रोका भी जा रहा है. कल के मैच में हमने देखा फर्स्ट हाफ में दिल्ली डिड अ प्रीटी गुड जॉब टू जस्ट कीप हिम आउट ऑफ द गेम फॉर मैक्सिमम टाइम. He came back and he scored those 8-9 points or 7-6 points in the second half. So these are the few things which they need to think कि क्या गलत जा रहा है. डिफेंस में या डिफेंसिव ड्यूटीज अच्छा निभा रहे हैं उनकी टीम. दे हैव 10.86 point rate defending points on an average per game, which is the second best after Delhi. So they are doing pretty good in defense. Just थोड़े बहुत जो loopholes हैं अगर वो उनको fill up कर सकें तो it will be a good team to beat. Right. Sorry, I was a little distracted because I was just putting up this Pawan Sehrawat का बैनर, because बहुत सी लोग यही पूछने के लिए बार बार ट्यून इन कर रहे हैं कि पवन को क्या हुआ. कुलदीप मलिक हमारे साथ कमेंट्स में जुड़ चुके हैं. व्हाट हैज हैपेंड टू पवन सहरावत, लेट अस नो हिज प्रेजेंट सिचुएशन. कुलदीप जी, अगर हमें पता होता तो शायद हम उसी के बारे में बात करते रहते, पर अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है पवन के बारे में. बहुत से लोग, as in people who are in and around the PKL setup, seem to think it's an ACL injury, but we don't know yet. So आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, या फिर जब हम लाइव कवरेज करते हैं मैचेस की, जस्ट कीप एन आई आउट ऑन व्हाट वी हैव, बिकॉज when we find out कि पवन को हुआ क्या है, we will update you guys over here. So for the time being, I'm going to keep that ticker on so that anybody who logs in knows that this is just how much we know about Pavan's situation, unfortunately. Just hoping that he recovers soon as well. बंगाल पे एक आखिरी बात बोलना है बिफोर वी वाइंड अप एंड मूव टू द नेक्स्ट टीम, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट श्रीकांत यादव एंड हाउ सिमिलर ही इज टू मनिंदर. सही बात है मयंक, ही इज़ वेरी सिमिलर, विच इज़ द प्रॉब्लम. बिकॉज जब मनिंदर को बेंच में भेजा जाता है, उनकी रिवाइवल उतनी उतनी तेजी से नहीं होती, विच इज़ वॉट वी सॉ येस्टरडे. कल जब नवीन को बेंच में बिठाया गया, उसको इंस्टेंटली रिवाइव किया गया. आइदर द डिफेंस वाज डूइंग इट और आशु मलिक वाज डूइंग इट. मंजीत हैड अ कपल ऑफ क्वाइट गेम्स, उसके 4 पॉइंट या 2 पॉइंट या कुछ थे कल, विच इज अगेन नॉट ग्रेट फॉर दिल्ली, बट दैट्स द थिंग. नो, उनके पास 3 रेडर्स हैं हु आर ऑल इन गुड
sort of form, and they were all able to perform properly. So one doesn't work, it's okay. It doesn't, it's not the end of the world. But बंगाल के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका सिर्फ एक रेडर बार बार चल रहा है, और बार, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि बार बार चलने की प्रेशर है उन पे. दिस काइंड ऑफ प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू द अदर टू, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट sort of trajectories in their form. श्रीकांत यादव की बात अलग है, दीपक निवास की बात तो completely अलग है. So that is a situation that Coach Bhaskaran needs to handle. What is really great to see, at least in the latest match that they played against Delhi, was they played on matchups. उन्हें पता था कि कौन सा रेडर या कौन सा डिफेंडर ऑपोजिशन की कौन सा रेडर या डिफेंडर को टारगेट करेगा. सो व्हेन दे रियलाइज दैट गिरीश एर्नाग बहुत हेस्टिली नवीन को पॉइंट्स दे रहा है, और नवीन भी उन्हीं को टारगेट करते करते आए कि उसके नीचे से ही मैं बोनस लूंगा, उसके नीचे से ही या फिर टो टच के लिए थ्रेटन करूंगा, या आई ड्रॉ हिम आउट फॉर एन एंकल होल्ड, व्हिच वाज रियली ग्रेट टू सी. सो यू कैन सी दैट दे हैव प्लान्ड कि मैं इस इंसान को टारगेट करूंगा, इसी से पॉइंट्स निकालूंगा. And seeing that, Bengal subbed him out. They took him out, which was great. That was a great strategic thing, because it's better to have him out than to keep getting him concede points. So Surinder Nada came for him for that one particular part of play, which I felt was brilliant. It takes that kind of strategizing, or those kind of matchups you have to be aware of or open to be able to handle them. So that's great. This is like what Uday Kumar did See, when I they would were like to add. Pirates. I would like to add one more point here. Hmm. कि Hmm. we've noticed that in the end of first week and the starting of second week, उस समय पे श्रीकांत यादव अच्छा चल रहे थे. तब Yeah. तब श्रीकांत यादव अच्छा चल रहे थे. देन उस समय एक आध मैच में आई रिमेम्बर दीपक निवास हुड्डा ने भी एक सुपर 10 लगाया था, एंड मनिंदर तो अच्छा चल ही रहे थे फर्स्ट वीक के एंड में भी. Yeah. तो दैट टाइम डिफेंसिव वाज लाइक डिफेंस में उतना पॉइंट्स आ नहीं रहा था उनको, फिर भी दे वर लाइक क्रूजिंग पास द टीम्स, क्योंकि रेडर्स इतना अच्छा कर रहे थे. यहाँ Hmm. पे धीरे धीरे हमने देखा है कि जब ने रेडर्स के पॉइंट्स आना बंद हो गए, तब डिफेंस ने भी उतना अच्छा बीच में परफॉर्म नहीं किया, तो मैचेस धीरे धीरे हारने लगे. लेकिन अब मुझे स्ट्रेटेजी में भी चेंज नजर आ रहा है. इवन दो अब रेडर्स उतने पॉइंट्स नहीं भी ला रहे हैं, तो डिफेंस चढ़ के खेल रही है अभी. तो Yeah. उनको एक ट्रेजेक्टरी जो उनका चेंज हो चुका है कि कैसे, एक हमने पहले सीजन पहले वीक में भी बात करी थी कि कैसे डिफेंस हैवी रेड हैवी टीम है बंगाल वॉरियर्स. फिर Hmm. भी उन्होंने ऐसा टैक्टिकल चेंज किया. उनके पास इंडिविजुअली दो तीन अच्छे सॉलिड डिफेंडर्स हैं. तो अगर आगे के मैच में भी उनको ये कंटिन्यू रखना है अपने विनिंग फॉर्म को, तो आई गेस दोनों को इकट्ठे मिलके परफॉर्म करना होगा. ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कहने के लिए, बट Yeah. आई स्टिल फील कि जब तक डिफेंस चलता रहेगा, तो रेड अगर ऊपर नीचे हुआ भी तो दे कैन स्टिल पुल इट थ्रू, लाइक जस्ट लाइक वी सॉ इन पुनेरीज केस. क्योंकि उनके केस में भी डिफेंस, आगे बात करेंगे हम कैसे पुनेरी ने मैं पुनेरी That's को right. बार बार ले आ रहा हूँ. No, but that's right. Unki journeys बहुत similar है. If you look at it, they started with very informed raiders, and then again their raiders also started faltering here and there. So, like you said, we'll get to them in a bit. अगला जो team है, so I hope this is fairly extensive on Bengal Warriors. हमने शुरू ही बहुत detailed तरीके से कर दी, but we'll try and keep them short for the coming ones. Let's get to Bengaluru Bulls. What did you make of Bengaluru Bulls this week? Okay, last week I said that even though they are in the third position, it looks kind of awkward to see them on the third position. I guess उन्होंने ये बात seriously ले ली है, and they are telling कि भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा. हम थर्ड पोजीशन क्या, हम तो फर्स्ट पोजीशन पे एम करेंगे. तो 24 points, 7 matches. They're giving tough competition to number one, number two. And one good thing मैंने नोटिस किया इस वीक में is the comeback. Like I've read somewhere कि उनके जो कोच हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके कोच का, वो Randir Sehrawat. रणधीर रणधीर सरवत, मैं उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ. वो कह रहे थे कि ये इसी कौन सी ट्रेन है जो सेकेंड हाफ में ही चलती है, फर्स्ट हाफ में नहीं चलती है. तो लेकिन चल तो अच्छी रही है. उन्होंने यू मुंबा के खिलाफ, ओह विल टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन इतना बड़ा डेफिसिट को उन्होंने पहले इक्वलाइज किया एंड देन उनको बाहर ही छोड़ दिया कि तुम जाओ. एंड देन कमिंग टू द पॉइंट वेयर दे ऑलमोस्ट बीट पटना पायरेट्स. पटना पायरेट्स वर जस्ट एंजॉयिंग देयर गेम, क्योंकि उन्होंने दबंग दिल्ली को हरा के आए थे. दे वर लुकिंग वेरी गुड. रोहित और सचिन की जो जोड़ी है, रोहित भूलिया सचिन, ये काफी अच्छे लग रहे थे. लेकिन मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि दूसरी टीम्स, अब मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 2 वीक में काफी हार्श रहा उनके लिए.
इवन दो वो जीत रहे थे तो आई वाज टेलिंग कि हाँ ठीक है, लेकिन इस वीक में उनके परफॉर्मेंस, इवन दो मुझे पता है कि हियर एंड देयर हैव बीन फॉल्ट्स, कुछ कहीं कहीं लो पॉइंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से एज अ टीम में खेल रही है, इवन दो विकास कंडोला को उन्होंने यू मुंबा के खिलाफ और पुनेरी पटना पायरेट्स के खिलाफ सेकंड हाफ में बाहर रखा था, जब क्योंकि उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, तो भरत और नीरज नरवाल ने उनकी कमी पूरी की। तो अच्छा अच्छा प्रदर्शन था इस वीक, तो दे डिजर्व टू बी ऑन द थर्ड स्पॉट फॉर श्योर। Yeah, in fact, from here, maybe आगे बढ़ते ही जाएंगे, hopefully. Like you said, I mean, those two important games against U Mumbai and Patna Pirates deserves to be spoken about. I think after how Bengaluru has been conceding points in the second half, despite Vikash Kandola waking up, वो भी that is another phenomenon that I will never understand. Vikash Kandola second half में उनको क्या हो जाता है, या आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो हाफ टाइम उनके लिए कुछ एनर्जी बूस्टर है या कुछ वातावरण बदल जाती है, वी डोंट नो व्हाट इट इज देयर, but it's really nice. So when you look at it from last season they had Pawan and Bharat unka backup raider tha. So backup raider is actually being very kind. They had Chandran Ranjit last season, if I'm not wrong, right? Bengaluru Bulls. I think he was with Bengaluru Bulls last season. And Pawan was always center, right, left, and center of the raiding then. So when you had Bharat that time, तब रणधीर सहरावत बोलते थे कि आप लोगों को पता नहीं पर ये भरत एक दिन पवन से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन. एंड Bharat's actually showing that to us this season in the sense, among all the people who are getting super tens, this guy is really underrated. हम उसके बारे में ऐसा भी बात नहीं करते जिस तरह से हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, which is quite sad in a bit. I mean, I think that's something we should also correct, but he's been great for Bengaluru Bulls, absolutely great. He's in a lot of senses खुद से तो आई गेस sort of raising the responsibility. his consistency is speaking for him, like उन्होंने Yes, ये बता exactly. दिया है कि मुझ पे भी ध्यान दो भाई, अब हो गया काफी टाइम। Exactly, exactly. And it's really nice to see that he's using his height, which is not something he did या regularly last season. So, you want to say सी something? पर्सनली आई थॉट कि बेंगलुरु का स्लंप आने वाला है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि जिस तरीके से टीम थी, आई एम सॉरी इवन दो दे हैड सम फॉल्ट, आई नोट करो, okay? तुम सब लोग ये नोट करो, यही इंसान है जो बोल रहा है कि बेंगलुरु का स्लंप नहीं आएगा, बट और ये मैं होता है नहीं तो नहीं मैंने जाऊं. बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम ऑन द थर्ड पोजीशन। और आई गेस जैसा उन्होंने खेला है अभी तक, मतलब जो जीते हैं, पूरी कॉन्फिडेंट है टीम, इवन उनके कोच इनिशियली मुझे याद है कि थोड़े से उखड़े उखड़े लग रहे थे, बट अब कोच भी उनको पता है कि हमारी टीम सेकेंड हाफ में चढ़ के खेलती है, हमको Yeah. ऐसे ही खेलने आता है, हमको लीड लेना है, अगर लीड देना है तो उनसे छीनना भी आता है। तो आई डोंट नो कब तक ये कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छे से कर रहे हैं। Yeah, that's true. That is the question to answer actually, कि कब तक continue कर पाएंगे, because a lot of these wins are also comeback wins. But why does it have to be a comeback win? अगर ये quality है टीम का तो पहले ही stamp करके रखो ना. Because now going forward, these close wins are not going to help you. जैसे हम नेट रन रेट की बात करते हैं क्रिकेट में, यहाँ पे एक डिफरेंस भी बनाए रखने की जरूरत होती है. It comes down to help you at some point because 6 teams progress to that knockout. So if it gets down to score difference being the parameter that will work for you, then these close wins are not going to do anything. Anything. It doesn't See, matter if you've. they have been the Yeah, fourth worst team in conceding total points. They've conceded exactly. 245 points, which is fourth worst in this league. उनसे ऊपर 8 टीमें हैं जो उनसे कम पॉइंट्स कंसीड किया है, Concede तो कर दिस चुके इज हैं, exactly. कर चुके हैं, तो And सो the दिस fact that इज द they've पॉइंट। won some of these games, या like या if it goes down to करेक्ट। see that they've actually gone and won some of these games after conceding so much, तो quality है. But again, your defense needs to step up. This is a constant issue. They're good enough to win the games, but they're not good enough to prevent those points from slipping peli. So Randeep Sehrawat actually has his hands full in this sense because okay, अब तुम्हारा rating unit ठीक ठाक ओके चल रहा है, they're managing to do the job, they जो भी है इस प्रेशर में है whatever, but when are you going to fix your defense? This needs to be addressed because teams like U Mumbai and all, actually, if you put up a tight defense in front of you, there's no way they're picking points. No way. People like Guman and all, you're letting him come into form, yaar. You should have seen how they started, no? And Yumumba की बात तो हम अलग से कर ही लेंगे वैसे भी, but there are these questions around the defense that Bengaluru has to answer very urgently, and I hope they do that fast so that हमें
ऐसे टाइट गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं जहाँ पे हमें पता है कि वर्कलोड सेकंड हाफ में ही इंक्रीज होगा. So hopefully, I think they also should take a look at these things and sort of try and fix those aspects. But Vikash Kandola coming into some sort of form and Bharat have been very, very fun to watch. It's nice to Yeah. see them taking those multi-point raids and being smart about the bonus. And these are, if anybody here is training to be a raider, please इन लोगों को देख के सीख लीजिए. These are good raiders. They're clean, good raiders who are trying everything possible to pick a point. So that's delightful to watch, I suppose. So that, anything else? Have we missed out anything in terms of Bulls? It's nice to see Randir Sarawat has calmed down a little on the sidelines. जैसे Maybe ही because उनके वो उनके जीत रहे झोली हैं. में पॉइंट्स, या एग्जैक्टली वही उनके तो. झोली में पॉइंट्स आ रहे हैं तो इट्स लाइक अभी गुस्सा नहीं करना है. वही तो. I was just gonna say that maybe because वो जीत रहे हैं, but yeah, hopefully ये शांति बनाए रखनी चाहिए sidelines में. वो तो नहीं चाहिए कि कोच को भी ग्रीन कार्ड मिल जाए, which also happens very, very often. So that has been fun to watch. All right, Bengaluru Bulls, Bengal Warriors done. Dabang Delhi करें अभी because they've दबंग had an दिल्ली, या interesting week. विल रैप दिस वेरी क्विकली, क्योंकि हमने दबंग दिल्ली की बात पिछले दो तीन दो टीमों के तीन साथ का भी कर ली है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो देवर द टेबल टॉपर्स एंड दे स्टिल आर द टेबल टॉपर्स, इवन दो उनका बीच में एक थोड़ा सा हल्का स्लंप आया था. दो दो मैचेस खेले इस वीक में, दोनों के दोनों उन्होंने गंवाए हैं. बट आई पर्सनली फील इट्स गुड फॉर द लीग, क्योंकि एक टीम अगर रन अवे कर जाएगी तो बाकियों के लिए एक प्रेशर रहता है कि एक स्पॉट तो गया, वी हैव टू प्ले ऑन द नेक्स्ट 5 स्पॉट. लेकिन अभी भी मतलब जिस तरीके से विल टॉक अबाउट पटना एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ बंगाल डिफीटेड देम. बट अगर आप दबंग दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखो तो 7वां मैच है एंड नवीन ने 7 मैचेस में सुपर 10 तो लगाए हैं, लेकिन नवीन को हटा दो तो क्या. लाइक इससे पहले आई रिमेम्बर हमने पिछले वीक में बात करी थी कि कैसे उनका डिफेंस भी उनके रेडर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. कैसे रवि, विशाल, कृष्ण और विजय ये हर मैच में ऑन एन एवरेज लगभग 10-11 पॉइंट्स ले रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा मार्जिन है मैं कहूँगा, क्योंकि अभी भी उनकी रेडिंग यूनिट खराब नहीं है. हर मैच में उनका एवरेज 11.14 रेट पॉइंट्स का रहा है, जो कि इस सीजन में बेस्ट है अभी तक. फिर भी लेकिन अगर जब तक मंजीत और आशु मलिक, ये जो ट्रायोलॉजी थी इन तीनों की, इसमें से अगर दो स्तंभ हट जाते हैं तो कितना भी प्रेशर नवीन डालना चाह रहे थे वो एक ना कहीं तरीके से कंपनसेट करने में कंपनसेट कर लिया था बाकी टीम के रेडर्स ने. अगर हम पटना की बात करें तो रोहित गुलिया उस मैच में काफी उभर के आए थे, और सचिन तो चलिए एवरग्रीन रहे हैं, भले ही उनके नाम में सिर्फ एक सुपर 10 आया, लेकिन ही हैज बीन कंसिस्टेंट इनफ. एंड सेकेंड मैच में हमने देखा कि मनिंदर ने 9 पॉइंट लिए थे. तो ये सब 2 मैचेस हारे हैं, लेकिन एक चीज मुझे ठीक लगी कि इवन दो मिड गेम में देवर लाइक चेजिंग ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट का लीड, लेकिन इवेंचुअली पहला मैच में उन्होंने 4 पॉइंट्स हारा 37-33, सेकेंड में वो हारे 35-30, यानी कि 4 और 5 पॉइंट के डेफिसिट से. तो इन दोनों मैच में भी देवर एबल टू सैल्वेज अ पॉइंट ईच. सो ये पॉइंट अच्छा है कि एक एक पॉइंट निकालने में वो कामयाब रहे हैं. लेकिन चलिए ये डिप आना आई डोंट नो ज़रूरी था या नहीं, लेकिन ये एक क्वेश्चन तो साथ में खड़ा कर दिया है कि कितनी सॉलिड टीम है. क्योंकि मुझे अभी भी याद है फर्स्ट वीक में यू सेड सिमिलर थिंग्स अबाउट दबंग दिल्ली, कि कैसे अगर इनके डिफेंडर्स या कोई कोई जो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं वो अगर ये एग्जैजरेट करते हैं तो शायद उनके खिलाफ भी जाएगा, ये आगे मैचेस जा सकते हैं. बस एग्जैक्टली सिमिलरली ये होता हुआ दिखा हमें सीजन. हमने जो फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी वो सारे के सारे हमें कॉल बैक कर रहे हैं इस That's एपिसोड के what लिए, आई I'm फील. telling you. हमें वही एपिसोड चिपका देना चाहिए हर हफ्ता. Especially for some of these teams because like you said, नवीन चल रहे हैं which is great, but there are ways you don't like. अगर आप directly नहीं जा पाते हो then teams know how to take the long route and get to where they need to get to. And Krishan Dul was really consistent. पहले maybe 1.5 weeks में Krishan Dul बहुत ही consistent थे उस right corner में, पर उनको भी अब बहुत सारे mistakes करते हुए हम देख पा रहे हैं, which is not great again because right corner में उनकी solidity बहुत important है. When raiders are coming in from the left, you need that solidity. So the fact that Krishan Dul भी point leak कर रहे हैं वहाँ बैठ के does not bode well for Delhi at all. Having said that, Delhi's defense
even though there are issues here and there, they have managed to revive. In this Bengal Warriors game, if you look at it, I was really happy to see he more than the Raiders, the defenders were reviving Naveen. And super tackle situations Hmm. में they are able to work. Like उनसे हो Correct. रहा है कि okay ये कर सकते हैं, we can play on the super tackle, which is great. That also takes a level of confidence, No, especially you if it's made just a, yeah, yeah. हाँ. You made a very good point कि जिस तेजी से नवीन बाहर जा रहे थे. I remember against Patna Pirates first half में in the 20 minutes he was out for almost 7.5 or 8 minutes. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तेजी से वो बाहर जा रहे उसी तेजी से अगले रेड में या उसके अगले रेड में डिफेंडर्स हो या इधर आशु मलिक हो, they were able to get him back as soon as possible. So ये उनके ये यही एक्चुअली यही एक मेजर पॉइंट था जो कि through that they were able to like reduce the deficit to under 7 point. So I guess कि अब आगे कैसे वो इस तरीके इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन ही नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि they were like winning 5 out of 5 games. तो हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसा पॉइंट भी आएगा कि जब हम दबंग दिल्ली के बारे में ऐसे बातें करेंगे, बट ये आ चुका है एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, सो दे हैव टू लुक But I'm बैक. glad. I'm glad, honestly. या. When Patna Pirates beat Dawang Delhi, I was easily, at least, I don't know about you, but easily, I think some No, of no, us were no. like the happiest people in the room Yeah, because for it sure, really opens up the league. It's nice to for see, sure. like, even table ke bottom ke jo teams hai, which again shows you these are not bad teams. It's just that their combinations are horrible. या फिर उनकी मैच स्ट्रैटेजी में कुछ हो रहा है या फिर वेरी अनफॉर्चुनेटली मैच के टाइम ही इनके लीड रेडर्स फॉर्म में नहीं है. I see a lot of questions about Telugu Titans. We see Ipsits asked us what's wrong with Telugu Titans, and Gurnam has come and asked us again why Telugu Titans did not make a good combination. Gurnam ji, why Telugu Titans did not make a good combination is something we've been asking from day one. ये बात तो सिर्फ टीम ही आंसर कर पाएगा आपके लिए क्योंकि उनकी ऑक्शन में like we've spoken multiple times, Mayank, they've got a strong team on paper because on paper they have some of the most illustrious names in kabaddi. If you look at that defense, अगर ये सारे लोग फॉर्म में हो जाते तो बाकी सब लोग बस घर चले जाओ, इनको ही ट्रॉफी दे दो. If it was purely on names, if we were going on names, पर जैसे राम मेहर सिंह जी बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं होता, मैट के ऊपर आप जो काम करते हो उसी से बात बनती है. Titans have not been able to back up their reputation. It's a simple case of that कि इतने सारे illustrious players हैं पर कोई भी फॉर्म में नहीं है. तो this is कि what you नाम get when बड़े, you have नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो चुकी जी. है. I would like to point out a fact Brutal. that like okay Lavanya, I would like to ask you a question. Season 5, season 6, season 7, season 8 और season 9 में आप क्या कॉमन देख रहे हो This is Mayank's जी. favorite question. We've spoken about this 3 times this week. You see Tamil Talaivas, Telugu Titans in the bottom in all these seasons. Okay, You are very Tamil happy Thalivas with will this. You are no, very not at all. happy with this revelation, aren't you? In the sense कि ये अच्छा सा stat बन गया है. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि See, प्रमोशन it's रेलिगेशन अगर पीकेएल में होता तो कैसे होता. तो ये दो तो it's टिकते ही sad नहीं. for, yeah, it's sad for Tamil Thalivas and Telugu Titans. बट अगर हम अभी चले तमिल की बात नहीं भी करते, अगर हम तेलुगु टाइटंस की बात करें तो we have talked about them a lot in first and second stream कि कैसे इंडिविजुअली, अगर आपने जो बोला कैसे इंडिविजुअली they were like they have the best names. अगर आप मोनू गोयत को ले ले, रविंदर पहल को ले ले, लाइक डिफेंस में तो दे हैव द बिगेस्ट नेम इन पीकेएल हिस्ट्री. सुरजीत, रविंदर, विशाल, आई गेस अगर ये तीनों फॉर्म में हो, आई डोंट थिंक कि कोई भी इनके आगे टिक सकेगा जिस दिन ये अपने फॉर्म में हो. लेकिन दिक्कत क्या है तेलुगु टाइटंस के साथ कि इनका डिफेंस भी काम नहीं किया है, साथ साथ रेडर्स भी बिल्कुल खराब फॉर्म में मुझे नजर आए. तो एक साथ अगर आप कोई कोई टीम्स है जैसे कि हमने देखा बंगाल का, अगर रेडिंग यूनिट नहीं चला तो उन्होंने उनकी डिफेंस उनको बैकअप करने में रेडी थी. ये टीम दोनों तरफ से सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंसीड किए हैं, सबसे कम पॉइंट स्कोर किए हैं इन्होंने. तो रेडिंग यूनिट और डिफेंसिव यूनिट दोनों ही दोनों तरफ से ये वीक हैं. ऑन पेपर्स तो स्ट्रांग है, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है तो आई डोंट थिंक इन्होंने ऐसा कुछ भी किया रिमार्केबल. अगर आप वो मोनू गोयत का एक मैच हटा दे जहां दे वर एबल टू salvage a victory, but I don't think उसके उसके अलावा कुछ भी बात करने लायक है इस टीम के लिए. I'm so sorry for telling this. Yeah, but it's an interesting thing because agar hum okay, if we keep away the sympathies and everything and we look at it objectively, then Telugu Titans and Tamil Talaivas are actually a very good case study on how not to do an auction. Because in a lot of ways,
Telugu Titans, जैसे आप बोल रहे थे, they have great names, but they're all names that are has-beens. Has-beens is very rude. This is a very rude way of saying it, but I hope you understand where I'm coming from. बहुत से ये जो stars है इस टीम में, 2-3 सीजन के पहले था उनका पीक, वहां से उनका पीक गिर भी चुका है. इट्स नॉट लाइक दे आर डिस्कवरिंग कि ओ गॉड ये प्लेयर्स चल नहीं रहा है. रविंदर पहल हैड अ पुअर सीजन लास्ट ईयर. Monu has been sliding for a few years now. Siddharth Desai last season he had multiple injuries. He's coming back. उनकी जो वो caution, that sort of tentativeness, you can still see it. He's not the raider he was a couple of seasons ago. वो ruthlessness नहीं है उनमें अभी भी. You can still see it. झलक दिखाई देती है यहाँ वहाँ, but full force में नहीं आ पा रहे. Same way Vishal Bharadwaj has made multiple mistakes in defense for Telugu Titans itself. He's been with this franchise for the last couple of seasons, and we've seen how he's gone wrong. Surjit had a good season. Good is okay, maybe over exaggerating it a bit, but he had a fair season with Tamil Talaivas where he was rallying the defense there. But again, not good enough, or not good enough to hold a falling defense together. So ये सब आपके सामने था, तो आप किस बेसिस पे इनको चूज किया आपने? So this is it's a very good question to pose to the team management. I hope we can do that one of these days going forward. But yeah, again, Tamil Talaivas as well spent 2.5, 2.23 crores or something on Pawan. Why didn't you prepare for a contingency, yaar? When you spend so much money on one player, अगर वो player नहीं होता, that should have been a conversation you should have had before investing that kind of money. So your reserves should have at least had little bit to match up. It's as simple as that. कबड्डी है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट में इंजरीज नहीं होती. So these are things you have to prepare. So in a lot of senses, Pawan's injury also is a wake up call कि एक इंसान पे अपना सारा fortunes टिकाए मत रखो. नहीं होता है. See, It's stats. unfair on that player. If we talk about stats wise, they've been the worst team. They've conceded 266 points this season, which is the worst, and they have been only able to score 26.26 total points, which is the worst. So again, like speaking and asserting same thing कि ना उनके रेडर्स काम कर रहे हैं ना उनके डिफेंडर्स, तो जीत आएगी कहाँ से? Exactly. But if now, since we're talking about the sort of fallen teams in the bottom, we'll talk about Tamil Talaivas and sort of finish them off as well. Tamil Talaivas ki baat, okay, we've discussed the negatives, we've discussed what they've got wrong, but there are a few players who you have to commend, like Narendra. Narendra Hoshiar has been a very encouraging player to see because he's taking the load all on his own. Usko agar touch points bhi nahi mil rahe, he's being smart about the bonus, getting the bonuses and coming back. Same way, I think कबड्डी के दुनिया में जितने भी हिमांशुस थे वो सब इसी टीम में आके फंस गए. एंड And the good point is हिमांशु सिंह चले, उससे पहले हिमांशु फेल किए, हिमांशु सिंह चले, हिमांशु जो फेल किए थे पहले वो चले. तो ये हिमांशु के बीच में. रोटेशन में ही चलते जा रहे हैं ये टीम. हाँ. बट टू बी फेयर, या लाइक आई डोंट नो अबाउट द थर्ड हिमांशु, बट हिमांशु सिंह एंड द फर्स्ट हिमांशु व्हिच इज द हु या टैकल्स हिमांशु, एंड रेड. या हिमांशु नरवाल नहीं चले हैं अभी तक. या हिमांशु जो सिर्फ हिमांशु है जो फेल एंड हुए थे हिमांशु हु सिंह. डिफेंस, या he performed well, and he performed well in raiding against यस. UP Yodhas where the score 24. I remember he scored some 8 9 or 7 8 points in raid और alone. वो ज्यादा होता भी अगर उसकी सपोर्ट में कोई होता. उसी दिन नरेंद्र dipped a little bit. He was still Yeah. getting points, but he still dipped a little bit. So again, it comes down to the same thing. They're a down and out side. Now the coach has also changed. I'm actually interested to see how they go forward in week 4 because now they have a new coach. It'll be a new philosophy. And when it genuinely fascinates me to see Ashan Kumar has come in. How do coaches take up assignments like this? In the sense, unki mindset kya hoti hai when you come in, the team is just not winning, your star player is out, you know that it's everything's going against you. How do you pick up the morale of this team? Because you see the guys also, एक time के बाद उनकी भी morale बहुत गिर जाती है जब एक point नहीं आती या फिर constantly all out होते रहते हैं. It shows in the team's morale on the mat. So how the new coach can fix that will be a very interesting thing to see in week 4. So अगर आप लोग तमिल तलावास को पसंद भी नहीं करते, but it's still an interesting thing. It's an interesting sort of an evolution to track कि आगे जाके ये टीम करती क्या है. Even if you don't qualify, you can make life difficult for the other teams, which is kind of what Patna did with Dabang Delhi, which is being continued somewhere else now. So I think Tamil Talaiva should just try and have some fun. इतना प्रेशर ना लेके go for it. अगर if you just have to play for the sake of it, अपनी individual performances के बारे में सोचो and put on a show. That's the bare minimum they can manage, I guess, going forward. So whether they manage to do that or not, same with Telugu Titans.
Telugu Titans में actually I kind of feel कि Siddharth Desai, okay, I might be very optimistic in saying this, but I feel Siddharth Desai's best in this season is yet to come. And it feels like every game he's crawling a little closer to that. Because her game mein, one aspect of his game looks like the Siddharth Desai of the past. Are you Either talking when about he, the tussle between him and Bastami? no, not really. No, I see these are things I expect from Siddharth Desai simply because he's tall and strong. यार इतना जिम जाते हो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. So it's not, I'm not looking at specific matchups. It's just that in every game he only employs one aspect of his skill set. So it needs to come together. You have to be a smart trader. सिर्फ brute force से इतना ही काम चलेगा. Maninder is smart because उसको पता है कि when वो चलता नहीं है तो वो किसी और को बेच देता है. Be it Manoj Gowda या अजिंक्य कापरे in the last game. That was a very smart move. When he knew that point Yeah. is not coming, Super 10 के पीछे भागने से ज़्यादा win के पीछे भागो. He's a That's a perfect very team man clever that move. way. Sending Yeah, he's Ajinkya a Kapre. Maninder is a proper team man. There is no doubt about that. We've seen that season after season after season. But if that is working for somebody like him, Siddharth Desai can learn so much from him. Maninder से ये बात तो तुम सीख ही सकते हो कि कुछ चल नहीं रहा है, then try something else या फिर अपने raiders के साथ have a conversation, see how you can combine and come out. Monu Goeth is not a bad raider. He's just declining in form. But if you can use him on do or dies, or if you can use him just to pick bonuses, keep that as his responsibility. These teams need to have a conversation about roles. कि कौन क्या करेगा. Again, a great team they can learn from is Jaipur Pink Panthers. That team has really sorted itself out properly. कि ये इंसान ये करेगा, वो इंसान वो करेगा. राहुल चौधरी का जो कमबैक रहा है in a lot of ways. Comeback is a very, it's a weird word, but he's had a good season, yeah, compared to how the last two seasons went for him, where he was just sitting on the Patna bench, on the Tamil Talaiwas bench. Patna, I'm saying, sorry, Pune ka bench, Tamil Talaiwas ka bench. He's doing so well. He's your lead raider in the sense he starts proceedings for Jaipur. So that is saying so much about how they've sort of tweaked his role to fit Jaipur's sort of process of kabaddi. So Telugu Titans and Tamil Talaivas have all the templates in front of them. अब बस सीखने की बारी है बस. अगर वो सीखते हैं कि नहीं ये वीक 4 में हमें पता चल ही जाएगा बिकॉज दिस इज अ पिवटल वीक ये सॉर्ट ऑफ बीच में आ जाती है. It's nearing the middle of the league, so how these teams sort of negotiate this, plus they're moving to a new location now. Matches move to Pune. Pune's crowds are kabaddi crazy. So if you thought Bangalore is crazy, kabaddi Maharashtra की जो एक it's like one sport of pride in Maharashtra. ये सारे मिट्टी के जो sports है Maharashtra, Haryana, all that belt. So to sort of see how it's unfortunate that there are no matches in Chennai, but in a lot of ways Tamil Talaivas को बहुत सी गालियां बच गई because यहाँ बैठ के अगर ऐसे खेलते the crowd wouldn't be happy about it at all. But it'll be really fun to see now what happens with a new crowd, a new stadium. Just how these teams warm up to that challenge will also be very, very interesting to see. Talking about new stadium, हम लोग assume करते हैं कि पुणे में जा रहे हैं तो ये पुनेरी पल्टन का होम ग्राउंड है ना? Fair assumption. Fair assumption. But U Mumbai coach Anil Chaprana has come out and said कि हाँ हम लोग पुणे जा रहे हैं, पुणे तो हमारे लिए होम ग्राउंड है. So what it would have been fun if this Maharashtra derby had happened here. I don't know if the repeat fixture जो है, is it scheduled for the Pune leg? I actually Yeah, yeah, don't know. भूल गई it हूँ, I don't is. know. We'll have to check that. हम check करके बता देते हैं. पर अगर ये महाराष्ट्र derby यहाँ हुआ तो that would be fun because two Maharashtrian teams clashing in Pune, which is very, very crazy for its kabaddi, its kho. They like all of these sports. Yeah, they come out even though the stadium is a little further away from the city. They come out and they watch these games. So that'll be really interesting to watch. So since हमने U Mumbai की बात कही है, let's stick with U Mumbai. Mayank, what do you think about their performances this week? Okay, I've kept a note about how things went for Umumba because after first two matches, like if I'm not wrong, yeah, they have played three matches this week and they won the first match 32-31 against Haryana. They lost 32-42 against Bengaluru Bulls, which we'll talk later. कि कैसे हमने पहले ही बात कर चुकी थी बेंगलुरु बुल्स के टीम रिव्यू के बारे में. एंड देन दे वॉन अगेंस्ट गुजरात जायंट्स. One interesting fact is giving away their lead. Like, okay, this week, even though they have won two out of three games, positives की बात हम बाद में करेंगे. Although I like to talk about positive first and then jump to negatives, but see you. I have good expectation from you, Mumbai. So I don't want them
टू टू डू लाइक दिस. उन्होंने पहले मैच में अगेंस्ट हरियाणा स्टीलर्स उन्होंने 3 बार लीड लिया एंड दे जस्ट गेव द लीड थ्राइस टू हरियाणा स्टीलर्स, which इवेंचुअली दे वॉन द गेम 32-31. बट वो कुछ भी हो सकता था, वो इतना टाइट मैच था कि एक रेड इधर उधर एंड देन दैट्स गॉन. And then second cut to second match against Bengaluru Bulls, they were leading 21-5. मतलब yeah, if I'm not wrong, yeah, 14 points का lead लिया था उन्होंने, and then they just like disappeared after that. I don't know what happened to them. उस मैच में बेंगलुरु बुल्स they just like gave no chance to them. However, अगले मैच में उन्होंने गुजरात के खिलाफ मैं पर्सनली सुरिंदर सिंह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. वो जिस तरीके से, मतलब उनके अंदर जो ग्रिट है वो मुझे बाकी किसी डिफेंडर्स में लगता नहीं है. मतलब इवन दो गिरीश हुए या साहुल और सुनील की जोड़ी और अंकुश की जोड़ी हुई जयपुर पिंक पैंथर्स से, बट सुरेंद्र जो इफेक्ट लाते हैं डिफेंस में, I know I am being biased on him, but still I feel कि वो अपनी टीम का मोराल बूस्ट करते हैं अपने सॉलिड टैकल से. आई रिमेम्बर अगेंस्ट गुजरात, राकेश को वो पकड़ के जो खींचा उन्होंने. राकेश लंबे चौड़े हैं, उनको मतलब बार बार आके मतलब डू और डाई रेट्स में बहुत बहुत कठिनाई में डाल रहे थे वो गुजरात को. और गुजरात भी अच्छी टीम है, अच्छी टीम एज इन उन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं. गुजरात यू मुंबा के मैचेस में हमने देखा कि कैसे विद इन फर्स्ट 3 रेट्स पहले 5 मिनट में चंद्रन रंजीत अगेन इंजरी उनको हुई, वो शोल्डर इंजरी हुई, उनको स्ट्रेचर ऑफ किया गया बाहर. हाउएवर We उन्होंने don't know if it's a shoulder because now a lot of people who were in the match, right, venue में जो थे, they're suggesting it could be an elbow injury. जो भी है हाथ को ही ओके लगा है, ओके but yeah, he might be out ओके for a while. So that's not great for Gujarat. Yeah, go ahead. Okay, so there you go the update. I didn't knew that. Thanks Lavanya for that. लेकिन हमने देखा कि गुजरात ने 16-16 किया था फर्स्ट हाफ में. वहां से एक तरीके से मैच फिर खोल दिया डिफेंसिव डिफेंडर्स ने. इवन दो आई रिमेम्बर गुमान सिंह ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था. जय भगवान मुझे इस वीक, जैसे हमने जय भगवान में बहुत बात की थी सेकेंड वीक में, जय भगवान जय भगवान 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 करते हुए यहाँ तक पहुंच गए. लेकिन जय भगवान थोड़े से बैकफुट पे मुझे नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं एंड दे आर सेटिंग ऑन युम्बा सेटिंग ऑन 6th position. They've gained 3 position. Like they were on the ninth. They were sitting on the ninth position, and now they're comfortably sitting on the 6th position with 21 point. और वो टाई करके रखा है उन्होंने बंगाल वॉरियर्स के साथ. जो बंगाल वॉरियर्स का डिक्लाइन हो रहा था, उन्होंने एक मैच जीता, देन दे कवर्ड अप. लेकिन यू मुंबा जिस तरीके से खेल रही है, अगर वो लीड वाली बात को हटा दिया जाए या उनको वो कवर अप कर लेते हैं अपने जो मिस्टेक्स हैं, अगर इतना बड़ा आप लीड ले पाने में, मैं देख रहा हूँ जिस इंटेंसिटी के साथ यू मुंबा स्टार्ट करती है, वो हाफ टाइम में आके डिप करते हैं. अगर सेकेंड हाफ में वो डिप वापस अगर वो इंक्लाइन में चढ़ते हैं, देन दे आर सॉर्टेड. लेकिन वो जो डिप आ रहा है वो उनके लिए मेजर प्रॉब्लम है. आप क्या बोलना चाहोगे इस पे लावण्य? See, I think you've covered the games, like in terms of how their progression has been in terms of the games. U Mumbai की अगर बात करें, then I think one thing that we should talk about this week is, yeah, Surinder के बारे में तो आपने बात कर ही लिया कि how he's evolved into his captaincy role, especially. I think captaincy does well for some people Yeah. as performers. Surinder is one of them. Captaincy has suited him in the sense that he's able to put himself in match situations before. Otherwise, पहले फजल के अंडर जब खेलते थे, फजल had to, and that's, I think it says a lot about Fazal's personality also, कि people tend to rely on him and throw everything on him only. That tended to happen with you Mumbai. So when he took captaincy last season, it weighed him down. वो बार बार बात करते थे कि see, because of captaincy I have to think about everybody. I'm not able to think only about my game. But in Surinder's case, I think it's finally forced him to अपने आप गेम के बारे में सोचो, अपने आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचो, and that's done him a world of good. So Surinder the captain, one huge positive. Surinder the defender has been good. उसकी um, aptitude we know, yeah, we know what he's capable of. It's just that we're seeing it more this season. So I think that's a huge plus. The other plus has to be Haider Ali Akrami. I am really happy with what I have seen in the last couple of games, and I'm assuming U Mumbai also is very happy about it, which is why they put him in the starting 7. That really surprised me yesterday. It's See, not I without, was thinking it's not unwarranted. Huh.
I was thinking I have missed something. I've missed something big, and that is Hyder Yeah. Ali Ikrami. Yeah. Yeah, So I Haider Ali guess you, Akrami, yeah, he's like the Nabi Baksh. He's their version of Nabi Baksh, quite honestly, because he's able to tackle really well. He's done his one super tackle yesterday was absolutely brilliant. I think Rakesh ही था who he held him, turned him, and put him back in a super tackle situation. So he ended with 10 points, of which eight were 8 points, raid and bonus points, and then two was like came off a super tackle, which was really really good. And to see कि एक तो see we have seen New Mumbai where Guman Singh is so tentative, वो बस आ रहा है थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ, like we've seen him do that in the first 1.5 weeks. But with Ekrami yesterday, when this game against Gujarat happened, he was so confident. Yeah, I'm sure it might be different against a maybe a more confident defense. Maybe it might be different that way. But when you look at somebody who's confidently taking the defense on, going deep, going in for that bonus, these are great signs for you, Mumbai. Finally, you have somebody who can support Guman properly. And it's revive किया जा सकता है. You can work in pairs that way. अगर जय भगवान नहीं चला तो ये चल जाएगा. see And they Jay were Bhagwan is a similar raider, mind you. He's another raider like this who can work in defense as well. All rounder to hey. So you yeah, yeah you Mumbai was smart enough to play Ekrami in the first seven. yeah. लाइक एंड ये शो कर रहा है कि ग्रामी ने अपने आप के लिए एक पोजीशन बना लिया है टीम में. लाइक Yeah. उनका हमने देखा कि दो तीन सब्स्टिट्यूट में आते थे, पॉइंट्स लेके चले जाते थे. लेकिन ये हमने बाकी टीम के साथ भी देखा है कि कैसे तमिल के लिए विश्वनाथ हो गए या प्रपंजन हो गए. प्रपंजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्लेस फॉर Prapanjan is with Haryana now. हरियाणा. या Huh. हरियाणा के लिए उन्होंने कैसे सब किया था दो तीन मैचेस में, एंड देन ही स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेवन. Yeah. सिमिलर थिंग हैपेंड टू इकरामी. सो ऑल्दो Iranian players were not in the first 1.5 week or 1 week, एंड देन लेकिन इकरामी जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है रेडिंग यूनिट को यो मुंबा के लिए लास्ट मैच के बाद, या वेरी इंप्रेसिव. Yeah. And we know Iranians do tend to do well with Mumbai. Some of them even tend to lead them to titles. So if things go well, then maybe Haider Ali Akrami will have a huge role to play in New Mumbai, maybe going for that title yet again. Hopefully it gets there. I really like what I've seen of him, so I hope we get to see a little more of that. Finally, you see an Finally, you see an Iranian raider perform properly, which is, I mean, it's not that they don't, but we've seen so many Iranians perform really well in the starting seasons, but then it started becoming all about the defenders in the last couple of seasons, like Fazal or like Nabi Baksh. Nabi Baksh also all rounder hai, but he started sort of being more clinical in defense. So अब एक रेडर आके बहुत अच्छा कर रहा है is great, absolutely great to watch, and he's a name for us to watch during the Asian Games as well. So I hope we can have this conversation when the Asian Games teams come out also. तो ये रहा यू मुंबा. अब उनके पड़ोसियों के बारे में बात करें, पुनेरी पल्टन. हम बार बार पुणे पुणे आता रहा हमारे कॉन्वर्जेशंस में. अब पुणे के बारे में बात कर ही लेते हैं. What do you think about Pune's performances this week? I guess you would be the more apt one to talk about Pune. I guess I know you like them as a team. Yeah, I like them as a team. I'm actually, I was so ready when Fazal and Nabi came back. I was so ready to think, okay, you know what, maybe ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है. Maybe like their combination थोड़ा हिल गया है. Might be. I kept thinking about this, but then given what we've seen, like you said, they've had far too many close games, which is not something a team of Pune's caliber should be doing. That one part has been very disappointing. Like they need to sit down and discuss this through कि इतने close wins क्यों हो रहे हैं, इतना close क्यों जा रहा है एक game जब आपके टीम में वो potency है कि you can actually do something quite decisively. So to maybe increase the margin of wins is something Pune should start looking at. No better time to do this with home support behind you. बेंगलुरु बुल्स को जो भी एडवांटेज था, अब पुणे नीड्स टू सक दिस आउट ऑफ बालेवाड़ी स्टेडियम. अगर ये किया नहीं तो पॉइंट नहीं है यार. So that is one thing that I'll be looking at. Another thing that I'm actually very, very happy to see is Fazal, just how he's been this season so far, at least game after game. Fazal और Nabi Baksh का एक combination बन रहा है, which is very, very interesting to see because Nabi Baksh on his own does not warrant a starting seven place in my book. If you ask me, and I kept saying this, I don't know why Nabi Baksh is in the starting seven. Why is Nabi Baksh in the starting seven? But Abhi, when you look at it, you can see how much Fazal relies on him.
उनका ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर कंपैट्रियट्स, वो लोग साथ में खेलते हैं नेशनल टीम के लिए, बट वी सी देयर अंडरस्टैंडिंग कमिंग ऑन टू द मैट एज वेल, कंबाइंड टैकल्स कर रहे हैं. Nabi Baksh is giving him that confidence कि अगर Fazal goes for a dash, then he can pull the raider back. So you can see this kind of teamwork coming in between these two, which is very very nice to see. Another interesting thing is you constantly see Nabi Baksh in the ears of the Raiders. अगर आप मैच के टाइम देखोगे वो मोहित गोयत से बात करता रहता है. गिवन मोहित गोयत इज आउट ऑफ फॉर्म, नबी बख्श इज अ स्मार्ट गाय. यू कैन से व्हाट यू वांट अबाउट हिज फॉर्म एंड एवरीथिंग, बट ही इज अ स्मार्ट गाय. उसको मैच सिचुएशन कैसा एडवांटेज लिया जा सकता है, उससे ज्यादा शायद बहुत कम लोगों को पता होगा. सो टू हैव टू सॉर्ट ऑफ टैक्टिशियंस who are sitting down and really figuring this out is very very interesting for Pune. I will say just this, the Pune versus Jaipur match, I was actually worried if Pune would lose because Jaipur is a strong team. उनकी जो combination बन रही थी was very very interesting to watch. But to just see Fazal dictated the tactics in that game. For as somebody who's been watching Fazal Atrachali for a few years, nothing is more gratifying than see him use his mind more than his muscles. There is nothing more gratifying than that. That match was so interesting. Fazal had plans for every raider, every single raider, be it Rahul Chaudhary, be it Arjun Deshwal. Arjun Deshwal, in fact, has a better head to head record against Fazal. And Fazal stayed away or triggered some other defender to sort him out. Absolutely amazing to watch. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रोन ऑन नहीं करना चाहती हूँ, तो हमारे पास एक लाइव ब्लॉग का लिंक है जहाँ पे हमने बहुत मेटिकुलसली बैठ के ये हर एक रेड, हर एक जो टैकल था, उसको हमने डिस्क्राइब किया है. तो आप लोग वहाँ जाके उसकी डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं. यू विल एक्चुअली बी एबल टू सी प्ले बाय प्ले हाउ फजल ऑर्केस्ट्रेटेड द डिफेंस देयर. Easily one of Pune's better matches, and their margin of victory also was a little higher there, right? If I'm not wrong, they won 32-24, which is what, 8 points. 8 points. They Yeah. denied Jaipur a point. That Yeah. was Yeah. absolutely great. Absolutely great. Given that Jaipur was inching close to get that 1 point out of that match. So if Pune can just manage to do this, what they did versus Jaipur, make plans. I think what changed for them was that game against Bengal Warriors. Bengal Warriors may the advantage Pune has is Nabi Baksh, one of their main all-rounders, is with Pune. BC Ramesh, who was their coach in that title-winning season, is with Pune. So these guys know Bengal Warriors in and out. Okay, उनका जो philosophy है, मनिंदर का रेडिंग स्टाइल जो है, सब इन एंड आउट जानते हैं. That showed in their preparation, and to see them managing the same thing for Jaipur shows how much of work is going in the back end. So Pune is a very very serious knockouts contender. If See they do what? any Yeah. less than that, शर्म आनी चाहिए उनको. अगर उससे उस वहां तक नहीं पहुंच पाए तो they have to only hit themselves. Yeah. No, yeah. I was telling you whatever you have said, it summed up to the way they have performed in the recent past. क्योंकि after first week they were on the ninth position. Then second week में उन्होंने four points का jump लिया, four jump लेके fifth पे पहुंचे. अभी they are tied with Bengaluru on fourth. They are on fourth because उनका margin कम है, लेकिन they are eyeing on the first and second position क्योंकि दोनों टीम के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स का फर्क है, सिर्फ जयपुर के साथ और दिल्ली के साथ 3 पॉइंट्स का, जो कि एक मैच में भी ऊपर नीचे होगा तो पुणे कैन गो टू द टॉप क्योंकि द वे दे हैव प्लेड इन द रीसेंट पास्ट इज फेनोमिनल. हम जानते थे कि ये टीम थोड़ी ज़्यादा डिपेंड करती है ईरानियंस पे बाकी टीम से, क्योंकि फर्स्ट वीक में जब नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ असलम चल रहे थे. मुझे याद है कि दे वर स्टिल एबल टू गेट अ विक्ट्री विदाउट देयर टू मेन ईरानियन गाइस नबी बख्श एंड फजल. बट इनके उनके आने के बाद तो टीम, ये स्टार्टिंग से टीम अच्छी है, अभी भी अच्छी है, मैं बिल्कुल खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रही है हर तरीके से. मतलब डिफेंस हो, रेड हो, मोहित गोयत का भी चलिए उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन वो भी चलेंगे तो आई गेस कि ये जो छोटे मोटे 3-4 पॉइंट से जीत रहे हैं, ये हर हर मैच उनका जयपुर पिंक पैंथर्स वाला ही हाल होगा, वो किसी को पॉइंट्स लेने नहीं देंगे उसके बाद. Sahi baat. I think another interesting thing is, like, in the first week we spoke about how Gaurav Khatri and all are doing really well for Pune, which I will continue to maintain. Uska role thoda kam ho gaya hai because the Iranians are here. Positions different hai. Let's not confuse this. Gaurav Khatri works on the right, Fazal works on the left. It's different positions, but again we've seen the roles that these youngsters sort of assume has become less because you have other stars who are taking more mat space.
But I think one defender I've been very sort of slightly disappointed with is Rakesh Ram. He's proven to be, he's like the Saul Kumar of their team. उसी से points चुरा रहे हैं ये oppositions. So that's something I think they need to work on. Initially, Badal Singh also had that problem. Bala Sahib Jadhav also had that problem. But यहाँ वहाँ they're all able to contribute. So I'm just looking at their team for Bengal. If you look at their substitutes, right, जो भी लोग bench पे थे, none of them got any points. Three of them were subbed in during the game. Rakesh Ram, Pankaj Moite and Akash Shinde. Only Akash Shinde managed 2 points, वो भी because ये raider है. The defenders didn't do anything of note there. So what really works for us in terms of the defense here, if you look at Pune, is Fazal. Fazal is starting to score points, which is something that we didn't see so much in U Mumbai because वो सबको strategize करते करते वहीं पे time waste हो गया उनका. But here we're seeing Fazal actually involve himself. He's taking risks. He's coming out and coming in with He's those dashes enjoying and his everything. games actually. Yes, exactly. So this is particularly true of the Bengal Warriors match. Again, in the Jaipur Pink Panthers match, Fazal was orchestrating stuff more than actually getting involved. So if you he had like 1 point, and I think Nabi Baksh had some 2 points or something. But in this game, you see Mohit Goet managed 6 points, which is still it's very less compared to what he's actually capable of, but some points better than no points. Yeah, So for I sure. think they need to look at these things. They have raiding bench strength. If you look at people like Pankaj Moite, they have Akash Shinde bhi hai, who's been fairly good here and there. So they They need have to a very try young, and they have a very young yeah, side with the yeah, inclusion of two, three very solid guys who has a lot of yeah, experience in the PKL history. absolutely, So एक absolutely. बहुत But the balanced team है. danger, हाँ बैलेंस टीम है, but the danger again comes back to रेडिंग में अगर आप देखो तो again it's only Aslam. Aslam And is असलम का भी doing फॉर्म all the डिप work on किया his है. own. असलम भी like obviously he's still scoring points. I'm not See, but denying that. the problem here लेकिन is volume, yeah, yeah. no, it's not even volume. The problem here is Aslam always looks at himself as an all rounder because that's what he is. He is an all rounder. He does raiding and defending. So the issue is when you focus on all forms, you want to get involved everywhere, you want to contribute everywhere, you don't focus on one thing properly. So that sort of happened to him बीच में. अगर आप देखोगे लास्ट सीजन भी यही हुआ था, कॉन्स्टेंटली एडवांस टैकल करता रहता था, अनूप कुमार उसको टच लाइन से चिल्लाता था कि क्या कर रहे हो असलम, मत इन्वॉल्व हो जाओ, don't get involved, don't get involved. If you look at Mohit Goyat also, he also involves himself in tackles. In fact, in some of the games when he was not raiding well, he has tackle points. So if you, I understand the need for everyone being able to do everything, but after some point you have to cut the roles up, saying, okay, Aslam, now you focus on this. Somebody needs to support him. At least go get the bonuses. उसको किसी को इसको revive करना है. असलम बार बार जाता है bench में, especially when there is a proven matchup with somebody. Like if you have an ace defender, he'll go fall there only. During the Bengal Warriors game, he gave not Bengal Warriors. I think in the second week there was a, I don't remember which match this is. It's like on the tip of my tongue. He gave Telugu Titans. Yeah, he gave technical points to them by just stepping out of the mat. This is all. It just comes down to over eagerness. थोड़ा ज़्यादा excited हो रहे हो कि आपको ये करना है, वो करना है, ये भी करना है. So I think Fazal being there calms Aslam down, but that conversation has to happen a little more key so that they can be a little clear about what they're trying to do. Last season, even though Nitin Tomar was injured, they still had Nitin Tomar. They had somebody like that who knows what it's like to go in a crunch situation, get points, and come back. Same with Rahul Chaudhary. All these guys have played Iran in World Cup matches. They've stolen wins from Iran and come back and made India win. Aslam and Amdar and all don't have that experience. They're still new. So when you have someone like Fazal, that is something Pune needs to figure out. Ki ज़्यादा मत सोचो, जो करना है डायरेक्टली वो करके वापस आओ पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि एडिशनली क्या कैसे पॉइंट्स ला सकते हैं. So if they can cut down their over eagerness a little bit, I think this Pune side will manage bigger wins, which is what they need. This 1 point 2 point is getting tiring. They need big wins now. So hopefully the 8 point win against Jaipur is the start of better things to come. Shall we round out Pune there? Yeah, for sure. Yeah. Since we've spoken about Pune, let's head to the team that they last defeated, Jaipur Pink Panthers. Uh, I have actually been quite happy with Jaipur Pink Panthers, save this one loss. This loss was a little bit of a blemish on their record, but it's okay. There's quite a lot to discuss as far as Jaipur is concerned. Mayank, what did you make of their performances this week? Um, I've I was like tracking some of the stat points to see how Jaipur Pink Panthers was able to like climb through the rope. क्योंकि
उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, एक हारे, देन स्ट्रेट 5 victories and then again the loss against पुनेरी. However, they are still on the second position. उन्होंने dethrone भी किया था दबंग दिल्ली को for like 4-5 days. Although दबंग दिल्ली are still the table toppers, लेकिन दो तीन अच्छे पॉइंट मुझे ये लगे कि डिफेंस डिफेंस उनका, ओके हम रेट की बात करेंगे बाद में. डिफेंस में सुनील कुमार हैज 25 points in 7 matches. He is the second best raider till now in this league. And Ankush has 23 points in 7 matches. He is the third best raider in the league after Girish Arnak. So इनकी जो जोड़ी है, मेजोरिटी पॉइंट्स इन दोनों ने लेके आए. और सबसे अच्छा जो मुझे स्टैट लगा कि they had the highest tackle percentage. They have almost close to 50%, 46.67% tackles were successful. और इतना अच्छा स्टैट मुझे बाकी किसी और टीम का लगा नहीं. Also, this is a team who has considered the least point. Like we have talked about how Telugu Titans were not able to contain other teams. ये टीम जो है उन्होंने सबसे कम पॉइंट्स दिए सामने वाली टीम को. तो इस वीक में सिर्फ और सिर्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे हैव प्लेड ओनली वन मैच. इफ आई एम, वन सेकंड, जयपुर हैड प्लेड 5, ओके नो, दे हैव प्लेड 2 मैचेस. एक हारे एक जीते. तेलुगु टाइटंस था ना वो दूसरा 51-27 वन हॉरिबल Yeah, मैच. sorry. Yeah. या Oh, yeah. I was blogging that match. या How could I miss that? understand So, why you want to erase that memory from your head. Horrible game yeah. too. No, so I was telling कि रेड रेड की बात हम करेंगे क्योंकि कैसे, चलिए रेड की बात कर ही लेते हैं कि अंशुल देशवाल, अर्जुन देशवाल जो थे वो तो चल ही रहे थे. अब उन्होंने जिस स्मार्टनेस से राहुल चौधरी को भी फॉर्म में ले आए, मतलब Yeah. ले आए एज इन स्ट्रेटेजिकली पहले उनका जो, मतलब वो जाते थे डू और डाई रेड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो पॉइंट्स लेके मतलब आ नहीं पाते थे. यहाँ राहुल चौधरी स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ Yeah. आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने पिछले 3 के 3 स्टार्ट में पॉइंट्स लेके आए उन्होंने. तो और तो एक मोरल बूस्टिंग उनके लिए भी है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उनको पॉइंट्स आ रहे हैं. अब ही इज इन गुड मेंटल स्पेस राइट नाउ. टीम Yeah. अच्छा कर रही है, डिफेंस अच्छा कर रही है, अर्जुन देशवाल अच्छा कर ही रहे हैं. तो मैं क्यों पीछे रहूं, उनके साथ ये शायद केस होगा. तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं. और ये सब से हो क्या रहा है, इवन दो they lost the game against Puneri, they're still looking one of the better teams in this league. Yeah. अगर कोई कोई टीम डिथ्रोन कर रही है दिल्ली को इतने, वो भी इतने जल्दी, मतलब वी वर नॉट, पर्सनली आई वाज नॉट थिंकिंग कि इतनी जल्दी कोई क्लोज भी आएगी दिल्ली की. लेकिन दिल्ली को इतना अच्छा टफ कंपटीशन देना, और जिस तरीके से खेल रहे, लाइक 51-27 अगेंस्ट तेलुगु टाइटंस. जिस मैच में वो खेलते, जिस मैच में उनको पता है कि वो जीतेंगे, वो बड़े मार्जिन से जीतते हैं, Hmm. कन्विंसिंगली जीतते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब बहुत क्लोज मैच आ रहा है और इधर उधर से बच के निकल गए. वो Yeah. जहां जीत रहे हैं वहां कन्विंसिंगली जीत रहे हैं. हमने सेकेंड वीक में मेजोरिटी बात कर लिया था क्योंकि द बिग लीप ऑफ फेथ दे हैड इन द सेकेंड वीक. इस वीक में एक एक हार एक जीत तो एक लाइक इक्वल प्लेटर है उनके आगे. आई Yeah. डोंट थिंक दे हैव टू लाइक थिंक अ लॉट. अब Yeah. तक डिफेंस में पैनिक सब की सही तो जा रहा है. सिचुएशन नहीं है. या या एब्सोल्युटली. साहुल साहुल ऑल्दो थोड़े पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ही इज स्टिल दी, लाइक ही हैज 14 पॉइंट्स इन 7 मैचेस एंड ही इज द 20, he is on the 24th position in the best raiders list. तो ऐसा नहीं कि बहुत खराब जा रहा है इन डिफेंडर्स. तीनों का, सॉरी डिफेंडर्स, आई एम हाँ. सॉरी. तो हाँ. इन तीनों की जोड़ी प्लस रेडर्स, मतलब हर कोई पॉइंट्स ला रहा है, हर कोई अपने रोल को जानता है, हर कोई अपनी पोजीशन पे खेल रहा है. तो अब तक तो सही से सब सही जा रहा है इस टीम के लिए. आई गेस अगर ये कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से इनका गेम है, तो आई डोंट थिंक कि कोई टीम को ये मौका दे रहे हैं इजीली. Absolutely. I don't think I have anything to add to that. That sort of sums up everything perfectly. How I just want to see what more we can get from Rahul Chaudhary going forward. I hope कि ये situation नहीं है कि एक burst हो गया और फिर dip हो गए, because very See, evidently Rahul, he's important. yeah, Rahul Yeah. Chaudhary, match by match, he's been consistent. Yeah. सेकेंड वीक से उन्होंने फॉर्म को अप करना चालू किया, और हर मैच में हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू गो एंड लाइक डू सुपर रेट्स एंड हर मैच में सुपर 10 लेके आए. His role is to support, be the second raider, and he is doing absolutely fantastically. He is doing his job very correct. हर मैच में Absolutely. 7-8 पॉइंट आ रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है टीम
See, but the अब problem is what this does. Okay, this is not a problem, but what this does is it takes off an opportunity from somebody like Bhavani Rajput, who's been he's a very very good raider. yeah, He's what he yeah. can be a Bharat later on. वो है उसका quality. So Hmm. at least I know things are going to get harder for Jaipur because अब teams राहुल के लिए भी prepare करके आएंगे and Rahul is not that easy to prepare against. I mean, sorry, he's not that hard to prepare against. It is. He's got some very evident weaknesses which you can capitalize सी on. द And सी द ये गुड पॉइंट इज, अगर राहुल फेल होते हैं तो भवानी उनकी जगह आ सकते हैं, जैसा आपने हाँ, पर कहा। कितने देर में अलाओगे तुम? ये भी हाँ, वो प्रॉब्लम भी है ना। इतनी अब अगर राहुल आप खेल रहा है। मैच पॉइंट नहीं, मैच टाइम दोगे ही नहीं अगर match किसी को time तो। is, yeah, that is one, but the issue is now because Rahul is performing, अगर दो तीन unsuccessful raids भी हो गए, then you're still persisting with him on the mat. When do you decide to sub Bhavani Rajput in? मेरा पहला वीक में जयपुर का यही प्रॉब्लम था कि Bhavani Rajput was brought in so late and this is when Rahul was not performing. So now when he is, you don't see people like him getting that much of an opportunity, which is बट वाई okay, maybe a बट small price to pay. हाँ. बट वाई टू रिप्लेस अ ग्लास व्हिच इज नॉट Yeah, ब्रोकन yeah, yeah. दैट। Wahi to. That is what I'm saying. It's या not a headache. या They don't या have to worry about it. But yeah, it's one player, a very very good player who is actually आई physically more गेस agile. I हाँ, guess we are आप talking physical about, attributes पे देखो. yeah. I guess we are talking this much about Jaipur because of the way they have been playing. मतलब Yeah, उनसे expectation इतनी ज्यादा है अब लोगों को, yeah, क्योंकि 5 out of 5 wins is a big deal. yeah. Absolutely. And with So that they are sorted. Like अभी भी 26 points है 7 matches में, good. They're going good. Absolutely. So बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, but we'll keep seeing how they perform going forward. Now, the teams that we have to still talk about, and we'll go through them quickly. Gujarat, Haryana, Patna, and UP Yodhas, right? बाकी सब हो गया, 8 teams हो गए. Yeah, We spoke about Bengaluru Bulls, right? yeah. Yeah. Okay, ठीक है. So let's begin with Gujarat Giants. Gujarat Giants. I don't know what's happened here. It sort of feels like unka. Okay, first thing first. Since we spoke about this in the beginning, they have an injury concern to their captain, that is Chandran Ranjit. Uh, it's quite unfortunate to see that. So we thought it was a shoulder because when he went down holding his right shoulder. But what we hear now from, there were a couple of reporters. We obviously were not on ground, but there were a couple of reporters there on ground who seemed to think he had injured his elbow. सो एग्जैक्टली अगेन ये प्रॉब्लम पीकेएल का ये प्रॉब्लम है कि हमें ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिल रहा है इंजरीज के बारे में विच इट्स नॉट ग्रेट लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू फॉलो ऑन प्लेयर्स एंड एवरीथिंग इट्स नॉट रियली ग्रेट टू हैव दैट नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बट चंदन रंजीत इज इफेक्टिवली आउट एटलीस्ट फॉर अ फ्यू गेम्स सो वी वर जस्ट टॉकिंग आई थिंक हमारी नज़र लग गई क्या लास्ट लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक अबाउट अरे पहले 10 मिनट में सुपर 10 लाए अब देखेंगे अगर वो आगे जाके ये कर पाएंगे और इंजर्ड हो गया यही Unfortunate. है यार दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज द प्रॉब्लम विद great performances like this nazar lag jati hai so we wish chandan ranjit a very fast recovery but what that does for gujarat is now again you're putting pressure on rakesh because if not rakesh who कौन है वो तीसरा रेडर कौन है या दूसरा रेडर कौन है who will step up to that level now that is a huge question that gujarat has to answer and we saw that going against them in the U Mumbai game itself 37-29 ka loss to U Mumbai they but the plus point here is they beat Haryana 42-38 which was very very good game on in their standards if you look at it was a nice little team to beat they're registering wins against very good teams it's not like सिर्फ तमिल तलाइवास या तेलुगु टाइटंस के ऊपर से मैच जीत के जा रहे हैं गुजरात is posing very tough questions to some of these really competent teams I've liked what Shankar Gadai is doing in defense overall he seems like a very nice like a very nifty defender What he's do you think smart about quite strong what do you think about Pratik Dahiya? प्रतीक दया एज वेल लाइक इनिशियली मुझे लगा कि क्या कर रहा है डिफेंस ही कर रहा है बट ही सीम्स टू बी डबलिंग अप एज अ नाइस ऑलराउंडर जो सेकंड हाफ में डू और डाई रेड्स या फिर बोनस जहाँ पे आप पिकअप करके आ सकते हो ही So सीम्स टू बी he's kind वेरी of वेरी filling यूजफुल देयर he's kind of filling the third raider or now the second Yeah, raider for yeah, Gujarat. yeah. But surprisingly, in the last couple of games, he was not used as much. I don't know if it's because Yeah. he's carrying a niggle. कुछ तो है वहाँ पे. I think it could just be workload management for all you know. But yeah, Pratik Daya is great, but he's not the second raider. No, he's the third raider. तो कौन होगा second raider? But what's interesting to see now, see, it's not like these guys don't have people, okay? They have people like Prashant Kumar Rai is there.
उनके अगर यहाँ पे देखिए, आप अगर बेंच में देखोगे, दे स्टिल हैव महेंद्र राजपूत हु इज नॉट come good so much, but he's there. You have Rohit Kumar also who's there. So if you have to use, you have names to bank on, but none of these names are in form. So how do you fix this problem is something that Gujarat I think has to figure out now going forward, because राकेश बहुत बहुत दिनों से हेवी लिफ्टिंग खुद कर रहा है. So He this is he like has Sachin. he has 98 points in 7 matches, only Yeah, one less than Naveen. So yeah, it's phenomenal to see him कि obviously ये retrospect में आप देखोगे कि कुछ ज़्यादा ही उस पे प्रेशर है और वो मतलब अकेले परफॉर्म कर रहा है, लेकिन nothing to take away from him. वो yeah, कंसिस्टेंट रहा है हर मैच में. He has I guess 5 or 6 सुपर टेंस. yeah, और और नवीन को जो कि हर मैच में सुपर टेन लगा रहे हैं, उनको इतना टफ कंपटीशन देना इस लिस्ट में भी, yeah. इट्स प्रीटी गुड अचीवमेंट एट ऑल. Absolutely. And I think the other, like another aspect that's really working for Gujarat is Saurav Gulia, their defender. He's also been fairly consistent. And या to see, yeah, कि उसके tackles, intelligent tackles हैं. He takes the initiative, dash करता है, comes in from the other side of the mat and contributes. So ये सारी चीज़ें बहुत encouraging signs है राम मेहर के लिए. In a sort of sense, I think गुजरात का एक combination बन रहा है. But this injury has come at a very inopportune time for them. So how they get through Chandran Ranjit not being there, because Chandran Ranjit might not be the alpha male that you would expect a captain to be, but he's that calm guy who'll come do the job and go. उसको काम से काम रखने की आदत है. He's done that season after season after season for multiple franchises. So उसका एक, his to plug that gap is going to be very very hard for Gujarat Giants, and how they do that we'll see in the week to come. Next, Haryana Steelers. I'm interested to know what you think of Haryana Steelers, especially their performances this week. Okay, if I'm not wrong, they had played 2 matches in the first week. They won the 2 matches. In the second week, they played 2 matches. They lost the 2 match, Yeah. and they were like kind of a middle muddle. We have discussed about this, and apparently they had played 3 matches this week. Even though उनका एक break भी था Thursday, मतलब ये काफी busy week रहा है हरियाणा के लिए अगर Yeah. देखा जाए तो. एक Hmm. मैच उन्होंने जीता है और 2 मैच वो हारे हैं. एक Yeah. मैच अभी रिसेंटली जीते हैं, तो इट्स लाइक बीच में उनका 4 मैच का जो स्लम्प था वो आ गया था. आई गेस Hmm. हरियाणा के लिए दिक्कतें हैं. मतलब फर्स्ट 2 मैचेस के बाद लग रहा था कि मीतू मंजीत की जोड़ी तो गो थ्रू कर जाएंगी. अभी मंजीत Hmm. काफी मैचेस से एकदम शांत हो चुके हैं. अब तो पता नहीं मुझे, मीतू अकेले ही सारा भार उठा रहे हैं. अगर हर मैच में कोई आपका एक बंदा 15-16 लेके आए, Yeah. जैसे उनका उनका हाल राकेश जैसा हो चुका है कि लाइक राकेश इज लाइक अगर 6 में 7 में 90 हैं, उनको सब प्रेस कर रहे हैं, तो मीतू भी पिछले 4-5 मैचों में वही करते नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द रेडिंग यूनिट ऑफ हरियाणा स्टीलर्स. That's right. यू मुंबा के खिलाफ 31-32, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस. आई फील कि मतलब वो मैच कहीं भी जा सकता था. ऑल्दो चलिए आप हार गए वो मैच, क्योंकि 3 बार आपने लीड लिया और एंड में गवा दिया. तो अगर मैं ज्यादा ज्यादा गलती किसको दूं मुझे खुद पता नहीं, लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना होगा तो मैं हरियाणा को ही करूंगा, क्योंकि अगर आप 3 बार लीड ले तीन बार डेफिसिट को लीड में बदल रहे हो और फिर भी मैच हार रहे हो, तब तो कुछ दिक्कत है आपकी टीम में. एंड देन अगेंस्ट अगेंस्ट गुजरात गुजरात जो कि आपने कहा कि बड़ी टीम, मतलब हरियाणा को आप अभी भी अगर बड़ी टीम मान रहे हो तो लाइक बिग डील, क्योंकि हरियाणा Yeah. एक अच्छी टीम है. उनके पास डिफेंस में भी अच्छे प्लेयर्स हैं. अ, उनके पास पास्तामी है, उनके पास नितिन रावल है, उनके पास प्लेयर्स इंडिविजुअली देखा जाए तो काफी सॉलिड प्लेयर्स हैं. लेकिन और मुझे याद है कि बस्तामी को उन्होंने फर्स्ट 7 में खिलाया था और उन्होंने अपने पावर को शो किया. मतलब आखिरी 2-3 Yeah, ये यही है ना, ये तेलुगु टाइटंस वाली मैच थी, one that Bastami played in the या starting seven. 43-24, या Yeah, and he 43-24. also played, if I'm not wrong, in the U Mumba match when he got 4 points, I guess he has played all the 3 matches, if I'm not wrong. in the starting seven. Oh, you mean starting 7? No, Yeah, that he I has was. actually. He has played all 3 games in the starting seven. Okay, The okay. Umumba match was his best match, which is the irony here. Yeah. The one game you lost closely is the one game this guy is like played really, really well. Oh, hold on. Our old friend Sham has sent us a comment. Hi, Sham. Uh,
So do you see Dong Yong Lee getting some game time now in Chandran Ranjit's absence? Honestly, we've like season after season we've spoken about this. Dong Yong Lee ka utility Gujarat mein, I don't see it mirroring what it was in Bengaluru Bulls. I don't know what the coach's stand is on this. Okay, I really don't know what Ramayar Singh makes of Dong Yong Lee. Maybe his importance might increase now that there's no Chandan Ranjit. Might be a nice guy to use as that support raider for Rakesh. But I don't think he's only convinced that this guy can do anything. Usko bhi laake immediately sub out kar dete hain. Yeah. So I don't I understand get. why, because this guy can I do some guess. smart work. I guess in total he has played less than 10 or 20 minutes, if I'm not wrong. Yeah, exactly. Which is quite, I don't mind that. I don't mind that at all. But the thing is, if you look at how he was used by Bengaluru Bulls last season, he came in on very strategic high pressure points and he managed to quickly get 2 3 points यहाँ वहाँ and come off. So उसका role ही वही था. यहाँ पे I still don't know, or I still can't put a finger on what his role is in this team, if he has a role at all in this team. So now that Chandan Ranjit's not there, maybe Rammeer Singh will be forced to look at Dong Yongli and feel like, okay, you know what, we can do something with you. Because we know fully well that there is aptitude there to get something done. So we need to figure that out. So how they do that, good question. We'll see if they actually manage to add him in somewhere there. But because we're talking about Haryana in the same breath, Amir Hossain Bastami has been somebody that I think we can all very safely say that has been like a very nice guy to watch in defense. Yeah. He's got a lot of strength. वो brute strength use कर पा रहा है. He's able to bring down defenders single handedly. So that's really, really encouraging to watch. And both of us were like sitting and watching it on TV. And it made for some very good viewing on Haryana's part. Manpreet seems to be happy with the Telugu Titans ka win, but he needs to realize the win has come against Telugu Titans. Other teams will not lie down on their back and let you walk over them the way they did. So he's got a lot of work to do. Manjeet not being in form does not bode well for Haryana at all. Yeah. At all, like you said. So how they sort of fix that? अच्छी बात ये है कि Meetu is performing. Our first problem was that Meetu was not being given so much time. So Manpreet has really eased him into the season, and he's now taking up a higher role in the team, which is great. But they need to See figure the out. problem of Haryana is there always been one raider जो आपको पॉइंट्स लाके देता है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है. मतलब जिस मैच में अगर कोई एक रेडर पॉइंट लाके दे रहा है, उस मैच में आप डिफेंस में मार खा रहे हो, एंड देन अगर डिफेंस अच्छा कर भी रही है तो सपोर्ट रेडर में कोई पॉइंट लाने वाला है नहीं. Yeah, Like I don't know what happened to Manjeet. Like he was looking very good in the first week. उसके बाद से तो पता नहीं कहाँ चला गया. But I would wish to see Manjeet performing again, क्योंकि मंजीत मीतू की जोड़ी अच्छी लगती है ऑन पेपर्स भी. अगर yeah, जब वो फॉर्म थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकालते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो जब दोनों फॉर्म में आ जाएं, और क्योंकि ये टीम बुरी है नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं है ये टीम. इनके पास जो डिफेंसिव ड्यूटीज निभाने वाले प्लेयर्स हैं, जो yeah. रेडर्स हैं, तो ये टीम अगर जिस दिन अपने दम पे या अपना सबसे ए गेम लाके खेलेगी, उस दिन किसी भी टीम को चैलेंज करने लायक है ये. Absolutely. So now that we've done these teams, we've got two left, and these are two very interesting teams, Patna Pirates and UP Yodhas. If I'm not wrong, aren't they going up against each other this week? I'm not उनका एक very मैच आ sure रहा है ना? about that. Oh I'll yeah, check. tomorrow. Okay. Tomorrow's third game is Patna Pirates versus Oh UP yeah, Yodhas. yeah. Patna Yeah. UP, the वही तो Eastern आई Belt. वाज जस्ट थिंकिंग ये पटना यूपी का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता था व्हेन राममेर वाज देयर बिकॉज इन अ लॉट ऑफ वेज इट वाज Pardeep going up against his old team. It still is Pardeep going up against his old team. While we talk about Pardeep, let's put UP Yodhas here. While we talk about Pardeep, he's become the first player to cross the 1,400 rate point barrier. So there's no stopping Pardeep Narwal, it seems like. The funny part is कि उसके बाद कौन? Maninder is in second place. You have a number of people after that, but no one's anywhere close to where Pardeep is. But you can catch up. ऐसा नहीं है कि you can't catch up with his records. But कौन किसके पास है इतना consistency? एक पवन था जो अब पूरा season उसने गवा दिया है playing time. As so far, before anybody thinks I'm saying some bhavishyavani here, so far we've not seen Pawan. But it's been interesting to sort of see Pardeep grow into his role in this team. He's able to support Surinder well now. It's not just Surinder doing all the hard work. But UP में इस हफ्ते, what did you think of the kind of kabaddi they इस played, हफ्ते Mayank? इस हफ्ते they haven't played much. They played against only एक Tamil गेम था ना? Thalaiwas. एक गेम एक ही था तमिल, या
एक गेम था तमिल थलाइवास के खिलाफ, दे won very convincingly 41-24. So I Yeah, don't think there is a lot to talk about them क्योंकि कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है. Yes, they yeah, won the game again, लेकिन एक ही मैच खेला है तो they still dipped 2 points in the points table. However, they yeah. ended this week on a winning note, so अच्छा जा रहा है उनकी टीम के लिए. ज्यादा अगर हम Mm-hmm. खींचे नहीं बात को तो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू पॉन्डर. जो उन्होंने सेकंड वीक में गलतियां की थी, अगर उनको रिपीट ना करें उसी, क्योंकि मेन आई गेस जो भी खेल बिगड़ा था उनका फर्स्ट वीक के एंड में और सेकंड वीक में. ये Yeah, इस वीक में ज्यादा कुछ, इस ये वीक उनके लिए थिंक करने का था, ये वीक उनके लिए थोड़ा हल्के में लेने का था. एक मैच तमिल के, चलिए मैं तमिल को इतनी भी खराब टीम नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी टीम से अगर कंपेयर किया जाए तो एक इजी टीम थी. जिस जिस तरीके, yeah, गिवन दैट कि उनके पास पवन नहीं है, गिवन दैट उनके जो कोच हैं वो भी उनका साथ बीच में छोड़ के जा चुके हैं, तो टीम में क्या क्या चल रहा है वो भी मैच पे भी शो बहुत कुछ करता है. yeah. तो But see, यूपी के लिए, to be fair, आप ये बोल रहे हो, but UP Yoddhas in a lot of ways this win could have been a lot bigger. अब उनका क्या 41-27 कुछ था ना, if I'm not wrong. 41-24. 41-24. Oh gosh. Okay, 41-24. This win would have been a lot higher if they had gone with their initial का जो starting combination था. बीच में I would like to differ here because of the way Tamil Thalaiwas put good performance in raiding, क्योंकि हिमांशु चल गए थे उस मैच में. हाँ, आपकी बात गलत नहीं है कि और बड़ा मार्जिन था, लेकिन लेकिन आई गेस 15-16 पॉइंट इज नॉट अ बैड मार्जिन एट ऑल. No, it's not a पर bad that's not what I'm trying to say. I'm not saying that ओके, it was a bad margin. मैं जो no doubt there are some sparks of brilliance in Tamil Talaivas, वो बात नहीं है. बात तमिल तलाइवास की है ही नहीं. उनको अगर इस equation से अगर आप हटाओगे, I just feel like, and this is not a bad thing. It's not a bad thing that UP Yoddhas did. That win could have been a little higher, but they were willing to sacrifice points in order to rotate their raiders. So if you see, there was this Ratan who got the last couple of, I think, 5 minute mein, they changed a couple of their raiders. They gave the bench a lot of opportunities, which was amazing because they had already sealed the win. Yeah, 10 minute बचे थे मैच में. The win was well and truly in their hands. या अगर वो आंख बंद करके कबड्डी खेल लेते तब भी वो विन आ जाता without giving Tamil Talaivas a point. So it was nice to सो see UP Yoddhas rotating या players there. सो Yeah. इट्स गुड फॉर देम, नो, अगर वो दे Yeah, आर yeah, लाइक, wahi. या या Yeah, game अगेन, time mila. Yeah, that's what I was trying to say. Like या it was ओके, only one game, but they made use या of it that they were going up against one of the battered teams in the league और उन्होंने उस opportunity का पूरा फायदा उठाया. उनका bench को अच्छे से थोड़ा match time दे दिया कि ऐसा खेलते हैं वैसा खेलते हैं. Obviously, other match situations will be different, but good to see UP Yoddhas doing गिवन that दैट rotational गिवन thing. या गिवन दैट प्रदीप फॉर्म में आ चुके हैं और लेजेंड Yeah, फॉर्म में आ चुके हैं. तो yeah, प्रदीप अगर फॉर्म में है, सुरेंदर अपनी फॉर्म को बस कंटिन्यू करके रखें, और अगर न्यू प्लेयर्स को अगर कुछ गेम टाइम मिला है तो कॉन्फिडेंस ऑल्दो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही उनका भी. तो yeah, एक ही मैच मिला, आप नई नई जगह जा रहे हैं, आप नए लोकेशन पे जा रहे हैं, तो गिव इट अ फ्रेश फ्रेश स्टार्ट दीजिए और yeah. जो खेला है उनको रिपीट करने की कोशिश करिए. एब्सोल्युटली. और लास्ट टीम बचा है जो है पटना पायरेट्स. पटना पायरेट्स, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई हैव लाइक अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर पटना पायरेट्स मैन. आई सेम, डोंट नो मी इफ टू. इट्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज लाइक. बायस की बात नहीं है बट इट्स जस्ट रियली सैड टू सी या कि ये अच्छा टीम है. इन्होंने अपना कोर डिफेंडिंग को रिटेन किया एंड देन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग लाइक दिस. इट्स जस्ट आई डोंट नो. It's kind of I anticlimactic. I was heartbroken when they gave 3 points to Bengaluru Bulls. Yeah, Be- I mean heartbroken की बात नहीं है. Oh my god, लेकिन it's मतलब just because first of all I was so happy and I was on the seventh sky क्योंकि इन्होंने दबंग दिल्ली को हराया. एंड आई वाज थिंकिंग कि ये टॉकिंग पॉइंट बनेगा, और बना भी क्योंकि दबंग दिल्ली वहां से हारी एंड देन दे वेंट ऑन एंड लॉस्ट टू बंगाल वॉरियर्स. तो yeah, ऐसा नहीं है, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है. इन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, दे आर ऑन द 10th पोजीशन विद 13 पॉइंट. अगला है 18, 19, 21. सो yeah, अगर एक अच्छा, दो अच्छे मैचेस चाहिए इनको, तो दे आर स्टिल इन द कंटेंशन. लेकिन आई नो आई एम बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ, yeah, exactly. बट That's the problem. बट बट देर आर फ्यू गुड साइन, क्योंकि Rohit and Sachin, I guess I know this is very big name in cricketing field, but Rohit and Sachin की जोड़ी अरे is वाह. working, is working for Patna because do or die पे ये टीम खेलना पसंद करती है, if I'm not very wrong, and both of them has the highest point, 16 for Rohit, 11 for Sachin in do or die rates. So अगर ये do or die पे खेलना पसंद करते हैं और इनके ये दो प्लेयर्स do or die rate पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, that means something is going to their favor, although बहुत कुछ इनके फेवर में नहीं भी जा रहा है क्योंकि वो 10th पोजीशन पे हैं. ऑब्वियसली बात है, Yeah, अगर सब अच्छा जा रहा होता तो
they'll be chasing the first position, but they are not apparently. Yeah. But this team has everything in it to sort of put up a fight. Like you were saying, okay, so one thing that we have to really make note of this week is Mohammad Reza Chiane is starting to regain form. वो Yeah. slowly हो सकता है, but at least he's not, वो वहाँ बैठ के he's not looking at the ceiling or looking at the He audience started the or match. adjusting his hair. He started the Yeah, match comes against Tabang Delhi on a very bad note. I remember you were shouting yeah. to me that see this. But जैसे से No, match because खत्म that was होता a गया, perfect matchup. No, again, it comes yeah, down to this only. It was a perfect matchup where in the second half, suddenly he's like, okay, maybe I shouldn't be so nervous yeah, around Naveen Bolke. Then he correct. started actually holding on to his legs. Yeah, But I otherwise you're remember, just yeah, second half maybe in a do or die raid when Naveen came, 3 या 4 बार उसने अटेम्प्ट किया किक का, लेकिन वो पीछे yeah. फाइनली ही थॉट कि चलो एक अटेम्प्ट देते हैं, ही ग्रैब्ड, और उसके बाद से ही लाइक स्टार्टेड टेकिंग Yeah, मोर एंड उसको मोर वो बात पॉइंट्स. कॉन्फिडेंस दे के रख दिया बस कि he'll be able हाँ. to do that. And I think if I'm not wrong, in the Bengaluru Bulls match, he has 4 points. In that Dabang Delhi match, he has 3 points. He's definitely capable of getting higher points, tackle points. But it's nice to see कि he's getting involved because he's important. He's a very important cog in that Patna defense, and they've retained him because of that. So अगर वो चला नहीं, then one retention waste. Second, you're stealing one spot on the mat, which is again not great. We spoke about this point time and again कि वो युवराज का place लेके he was sitting there. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि युवराज डिफेंस का बाप है इन कबड्डी, दैट्स नॉट आई एम ट्राइंग टू से, बट he had game time in the first week and he was doing some stuff. कम से कम attempt तो कर रहा था. So to see Mohammad Reza sort of leave his inhibitions is an encouraging sign for Patna. So आगे जाके if they can actually beat UP Yodhas, right? Because UP Yodhas puts up a very important challenge for them. They are that very would be raider heavy. that would be one good match. Yeah, exactly. They're very raider heavy. But if it comes down to, see, बच्चा भी चिल्ला के बोल रहा है कि yes, I agree. So if you see, it's actually they're quite evenly matched if you look at it. You have Rohit Sachin from this side, you have Pardeep Surinder from that side. But they all have to fire for this game to be great. Otherwise, it'll end up becoming a one-sided encounter, which is what we don't want. So this match can actually decide. Like the Dabang win was a great moral win for Patna, but if they can actually beat UP Yodhas, why the hell should they not think they can do better this season? They should It be very upset given that they were leading the match and they just gave it away 3 points to Bengaluru Bulls. Bengaluru, yeah. क्योंकि वो मैच मुट्ठी में था, वहां से वो देके इट्स लाइक सॉफ्ट कॉर्नर है तो क्या. Yeah. So we've not managed to get over it, but hopefully Patna gets over it because the week coming up now, we've got some interesting games coming forward. Do you have any games that you're particularly looking forward to in week 4, Mayank? Yeah, I had 3 games, but I Mhm. will add you Patna UP given the fact that we have discussed about I forgot about these 2 teams, but yeah, एक Yeah. अच्छा matchup होगा given that we always give priority to the top teams क्योंकि Yeah. उनके उनके बीच में जो टसल होता रहेगा तो वो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मैचअप है जो जो we all can look forward to. And Hmm. one match would be Bengaluru Bulls and Dabang Delhi, given the fact that Bengaluru Bulls अब अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे नहीं, but they still are sitting on the third position with 24 points. And वो अपने मैचेस जीत के आ रहे हैं, दबंग दिल्ली एक स्लंप पे है. तो अगर दबंग दिल्ली यहाँ हारती है तो वो गिरेगी और बेंगलुरु बुल हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अप एंड ग्रैब द फर्स्ट पोजीशन. तो ये एक अच्छा मैचअप लग रहा है मुझे. मुझे पुनेरी और दबंग दिल्ली के बीच, अगर दबंग मैं थोड़ा बायस हो रहा हूँ, लेकिन मुझे दोनों टीम का मैचअप बहुत तगड़ा लगने वाला है क्योंकि एक तरफ होंगे नवीन एक्सप्रेस, एक तरफ होंगे फजल. तो ये मैचअप मैं कैसे मिस कर सकता हूँ. एंड थर्ड वुड बी बंगाल एंड यू मुंबा, बिकॉज यू मुंबा की डिफेंस बहुत अच्छा खेल रही है, प्लस अब उनके पास इकरामी भी फॉर्म में आ चुके हैं. एंड बंगाल को अपना ए गेम लाना पड़ेगा क्योंकि बंगाल के डिफेंडर्स भी अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. तो दोनों दोनों यहाँ से एक जीत निकालने की कोशिश करेंगे. तो these are the 3 matches which I'll personally be looking forward to. अगर आपके लिए आपको कुछ मैचअप लग रहा है Yeah, तो आप पूछ सकते Mira, हो. Mira, I'm particularly looking forward to two games. One is Haryana Steelers Puneri Paltan, which is tomorrow. And the other one is Jaipur and Bangalore, which is on Sunday. I think these two will be interesting games given where these teams are in their trajectory this season. So if they manage to do really well, this will shake up the points table a little bit. And I'm here for the chaos. अगर इस हफ्ते ठीक है. थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, then I'm here for it. देखते हैं कि क्या होता है, who rattles who.
It'll be Yeah, fun to watch. Patna UP as well. Patna UP is like a grudge match yeah. because Pardeep is involved. So how that goes will be really, really fun to watch. So So if who will be if you we rooting have for? who in Patna UP? Yeah. Uh, it's a hard question to answer, but honestly, Patna Pirates. I think just to Okay. see them get up somewhere, just get somewhere on the points table. Just for that, we'll see if they manage something. I'll root for them. But I historically have a very bad track record. Okay, teams I support don't usually win, which is why I don't support teams. तो मैं चुप रहने वाली हूँ. Let's see if it works tomorrow or if the jinx reverses. I'm not responsible. Patna Pirate fans do not come at the back of me. मैं अभी से हाथ ऊपर कर रही हूँ. Anyhow, we'll have Abhishek, our colleague, joining us on blogs this week for a couple of matches. So you guys will be able to see his commentary in some of our blogs as well. अगर आप लोग ये बाद में देख रहे हैं, like if you're not watching it live, then this is just a reminder कि हम live blogs करते हैं हर एक मैच के लिए PKL में. So if you can't watch a game या फिर अब T20 World Cup चल रहा है and you want to watch those matches instead, no problem. आप कबड्डी मैचेस को आपके फ़ोन पे जस्ट ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हो। हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ब्लॉक करते हैं, सो यू विल नॉट मिस एनी एक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द गेम्स। प्लस वील कीप यू अप टू डेट विथ एनी स्टैट्स, एनी रिकॉर्ड्स, एनी माइलस्टोन्स जो भी है। हमारा ये मयंक जी जो है यही बैठ के घिस-घिस के कॉपीज़ डालते हैं आपके लिए कि कौन-सा रेडर कितना पॉइंट ला रहा है, कौन रेडिंग टेबल को टॉप कर रहा है। सो आप प्लीज़ आके वो सारा कंटेंट चेक आउट कर लीजिए। We'll try and get some interviews out for you guys to check out as well. But that's all from us today. हम लोग ने बोला कि शॉर्ट Lavanya, करेंगे, yeah, बोलते yeah. हमारा I was 40 like मिनट्स कर दिया. before you end, I wanted to say to the viewers, like हमने बोला था कि सबसे छोटा stream रखेंगे, but I guess apparently this is our biggest stream, Yeah, and we have been constantly scrutinized to the fact that हम छोटा क्यों नहीं कर रहे stream को. But again, अगर कोई भी आपको suggestion हो, कुछ भी हो, अगर comment करना अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, you can comment and ping us in the comment section anywhere, and you can follow the blogs and read top readers, defenders copy, interviews, everything is there. like आपके लिए पूरा का पूरा पैकेज है, ना सिर्फ कबड्डी के लिए, बाकी हर अदर स्पोर्ट्स के लिए. यू कैन चेक आउट स्पोर्ट्स वेबसाइट. absolutely. Cool. We will end it there. Thank you so much for tuning in, जो भी था throughout this stream, and thanks for everyone who goes back and watches these videos through the week as well. We'll see you next Thursday. Yeah, bye bye. Bye.